welcome to our national seminar session hosted by Gandhi Study Circle, where we delve into the intriguing realm of Gandhi and Gandhigiri, Satyagraha discourses in movies and theatres. To speak on this topic, we have Dr. Ashish Ghosh, Dr. Ravikant, Dr. Smita Banerjee, and Professor Ankur Devraj. I would like to welcome our speakers and would request Professor Mangalam to please extend a token of gratitude to our honored guest. In this brief gathering, I have the privilege to introduce our first speaker of the session, Dr. Ravikant. He'll be joining in a bit. And for the introduction, he's a bilingual historian, writer, and translator. He read, researched, and taught modern Indian and world history in various colleges of Delhi University before joining the center's Sarai program at its inception in 2000. He's the author of Media Ki Bhasha Leela and Vani Prakashan. Dr. Ravikant's doctoral work, Words in Motion Pictures, A Social History of Language and Hindi Cinema, has navigated intermedia sites such as print, broadcasting, and web in an effort to offer creative connections between these media forms and its diverse publics. We are very grateful to have Sir here who will be joining us shortly. Our next speaker is Dr. Smita Banerjee. Dr. Smita Banerjee is a professor in English at Delhi College of Arts and Commerce, Delhi University. She specializes in post-colonial feminist and cinema studies. She is the author of Modernities and Popular Melodrama, the Suchitra Uttam Yog in Bengali cinema, co-editor of The Working Women, and also has published widely in the international and UGC care listed journals. We look forward to your intellectual insights, ma'am. We also have with us is Professor Devendra Raj Ankur. Born in 1948 in Sirsa, Haryana, he has studied theatre at National School of Drama in Delhi, where he obtained his diploma in 1972, specializing in direction. He has staged a variety of fiction and other literature without their adaptation into dramatic forms. His important productions include Mahabhoj, Rastam Sohrab, Yahudi Ki Ladki, Abhigyan Shakuntalam, and Uska Bachpan. Shri Devendra Raj Ankur has also received the Sangeet Natak Academy Award for his contribution to theatre as a director. We welcome you, sir. Now, I would like to introduce everyone to a chairperson for the session, Dr. Ashish Ghosh. Dr. Ghosh was born in a village in West Bengal, 1944. Memories of the place continue to inspire his artistic self, even after he shifted to Delhi in 1957 to complete formal education and make a career in academics in the University of Delhi. Theatre was in the family. He was fortunate to find mentors in academics, theatre, music, and choreography to combine these inputs and to start working in children's theatre from 1986. His Hindi plays have been devised in workshops first and subsequently written with contributions from the participants. He writes, directs, and performs in plays with the conviction that is simple and his most profound. He also has led several projects on drama and education. Thank you for providing us with your valuable time, sir. With extending our warm greetings to all the speakers, I now invite Dr. Ghosh to preside over the session. So please. Thank you. Hello? Hello? All right. Okay. Uh, okay, how much time we have? Which means we have, okay, so roughly we have 20 minutes each. Then we have discussions.
and we can make it as short as possible. Um, yeah, I was thinking why I'm on the chair. Thanks to uh, our friend. Yes, because someone wrote about Manmohan Singh as accidental prime minister, so I'm accidental chair. Um, let's start it this way, sort of a little introduction about theater and films. ये दोनों विधाएं जो हैं ये काफ़ी particularly films तो काफ़ी popular हैं और lately I find थिएटर भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है एट अ टाइम एक समय था जबकि सोच रहे थे थिएटर में कुछ नहीं रखा लेकिन अभी बहुत कुछ हो रहा है उसका एक इवेल्युएशन मेरे ख्याल में अंकुर जी हैं वो सबसे ज्यादा आई वॉज टोल्ड दैट देर अबाउट 30 फिल्म्स मेड ऑन गांधी एंड प्लेज आर न्यूमरस बहुत सारे प्लेस बनाए गए अब इनका हाय इनका संदर्भ कैसे रखा जाए हाँ तो एक बात दिमाग में आ रहा था कल भी मैं यहाँ था I was listening to various speakers and it was, some of the sessions were very illuminating. कैसे इसको रखा जाए एक तो ये है सत्याग्रह 21 सदी में किस तरह से देखें उसको सत्य सत्याग्रह सत्य now what I find is throughout 19th century 19वीं सदी में और 20वीं सदी में सत्य के ऊपर बहुत चर्चा होता रहा what is truth particularly in Bengal I find so many writers have been say Ramakrishna is saying that truth is one and you have to reach the truth by discrimination by every step you discriminate you argue so it is not pure bhakti combined with inquiry now this path had been taken over by Vivekanand we find in Ravindranath in Gandhi interestingly we find he defines truth as God I think that's something fantastically saying it also goes well with the nationalist project because अभी जो इंडिपेंडेंस के बाद जो थियरी आया है कि मतलब अप्रोच आया है विभिन्नता में एकता आई थिंक इट समवेयर सूट्स देयर ये एक संदर्भ है अब 21वीं सदी में आज के दिन थ्रू फिल्म्स और थिएटर में हम किस तरह से उसको देख रहे हैं क्या अपडेट हुआ है आज के संदर्भ में फिल्म बनाया जा रहा है या प्लेस बनाए जा रहे हैं आज इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें बिकॉज ये जनविधा है मतलब इट्स अ पॉपुलर मीडियम सो इट हैज टू रीच टू हाउ दिस कैन गो फॉर थिएटर आई थिंक अंकुर जी इज इन आई थिंक विल बी लीविंग वेरी शॉर्टली so first I will request Ankur ji to present his paper or he's the best person to talk about theater on Gandhi. So. ठीक है मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि इधर आर्यभट्ट कॉलेज का सेमिनार उधर पुस्तक मेला और किसी न किसी किताब का लोकार्पण हो रहा है तो वो लोग भर भर के किताबें मेरे पास पहुंचा रहे हैं मुझे उनको पढ़ना पड़ रहा है और उनके ऊपर बोलना है तो आज के लिए मैं क्षमा चाहूंगा आर्यभट्ट कॉलेज का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया पहले ये रामलाल आनंद कॉलेज इवनिंग जब होता था तब मैं यहाँ बहुत आता था हमारे मित्र होते थे डॉक्टर राजेंद्र गौतम फिर संपर्क छूट गया बहरहाल दोबारा होगा
ये भी बताना चाहूँगा कि मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय का ही पुराना छात्र हूँ। 1964 से 1965 तक पोस्ट ग्रेजुएशन करने के दौरान, तो जाहिर है कि तब तक तो आप में से बहुत से लोगों की यात्रा शुरू भी नहीं हुई होगी। एक बहुत छोटा सा आलेख है और इससे पहले लिखा था। सेमिनार की तो दूर दूर तक कोई कल्पना नहीं थी, अपनी पत्रिका के लिए लिखा था, लेकिन लगा कि अभी भी वो उतना ही सार्थक है। मैं पढ़ता हूँ और एग्जैक्टली 20 मिनट आपके साथ शेयर करूंगा। कला, साहित्य और गांधी। 21वीं सदी में एकाएक गांधी पर नए सिरे से पुनर्विचार की शुरुआत हुई है, और ऐसा सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं वरन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जा सकता है। मुझे लगता है कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि इधर पिछले 15-20 वर्षों में जिस तरह से समाज में हिंसा, अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक तनावों ने जन्म लिया है और फैलते चले गए हैं, उसके चलते हम और दुनिया भर के लोग गांधी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला जैसी विभूतियों को दोबारा से केंद्र में लाकर चारों तरफ व्याप्त सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक किसी एक रास्ते, किसी आस्था, विश्वास व आशा की किरण अथवा पगडंडी खोज रहे हैं। यदि ऐसा नहीं है तो क्या कारण था कि 1948 में गांधी की हत्या के बाद अगले 50 वर्ष तक उन पर कभी किसी गंभीर और गहरे चिंतन की जरूरत नहीं समझी गई। इसके विपरीत कई बार तो उनके मूल्यों, अवधारणाओं और स्थापनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए गए और उनकी सार्थकता को भी संदेह की दृष्टि से देखा जा। ये तो हुई देश और समाज की बात, लेकिन हमारे अपने क्षेत्र अर्थात कला, साहित्य और संस्कृति में भी इससे अलग स्थिति कोई नहीं दिखाई देती। मुझे याद है कि हम सिर्फ रेखाओं में बना हुआ गांधी का एक कार्टून लगातार ना जाने कितने वर्षों से देखते चले आ रहे हैं, जिसमें लाठी पकड़े बापू की पीठ दिखाई पड़ती है। इसी से मिलता जुलता चित्र R.K. लक्ष्मण के टाइम्स ऑफ इंडिया वाले कार्टून में आम आदमी की तस्वीर में दिखाई पड़ता है। हाँ, फोटोग्राफी के क्षेत्र में अवश्य ही गांधी की बहुत अच्छी और अर्थपूर्ण छवियां कभी अकेले में, कभी नेहरू के साथ और कभी दूसरे नेताओं के साथ हमेशा से उपलब्ध रही है। यही हम फिल्म्स डिवीजन द्वारा बनाए गए कुछ वृत्त चित्रों को भी याद कर सकते हैं। मुझे मालूम नहीं चित्रकला की दुनिया में गांधी को लेकर कभी कोई ठोस काम हुआ है, सिवाय गांधी जन्मशती वर्ष के, जब गांधी दर्शन दिल्ली में KG सुब्रमण्यम और देश के कई अन्य महत्वपूर्ण कलाकारों ने विशेष रूप से काम किया था। ये अलग बात, मूर्तियां ना जाने कितने कस्बों, शहरों और महानगरों में लगी हुई हैं, किंतु आज वे जिस हालत में हैं किसी से छिपा नहीं है। यहाँ तक कि इंडिया गेट के पास वाली छतरी से जॉर्ज पंचम की मूर्ति को हटाए हुए भी लंबा अरसा बीत चुका है। वहां पर मूर्तिकार राम सुतार द्वारा बनाई जा रही गांधी की मूर्ति को स्थापित करने का निर्णय हुआ था, लेकिन उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता। अब वहां पर नेताजी सुभाष की मूर्ति लगा दी गई है। इस दिशा में सबसे पहली और शायद आज तक की सबसे गंभीर कोशिश एटनबरो की फिल्म गांधी का बनाया जाना था, जिसे 1983 में सारी दुनिया में प्रदर्शित किया गया। इसका अर्थ ये नहीं कि इससे पहले या इसके आसपास गांधी को लेकर फिल्में नहीं बनाई गई। यदि हिंदी नाटक और रंगमंच का ही उदाहरण देना हो तो दिल्ली रंगमंच पर 1967 में हत्या एक आकार की नामक नाटक खेला गया था, जिसे ललित सहगल ने लिखा था, और ठीक उसी वर्ष गठित नाट्य मंडली अभियान के लिए, जिसे राजेंद्र नाथ ने निर्देशित किया था। बाद में इसी नाटक पर विमल आहूजा ने एट 5:30 शीर्षक से फिल्म भी बनाई थी, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई। हत्या एक आकार की बाद में भी कई बार अलग अलग निर्देशकों और नाट्य मंडलियों द्वारा लगातार खेला जाता रहा है और आज भी प्राय होता रहता है। देखा जाए तो ये पहला हिंदी नाटक है
जिसमें गांधी के विचारों और दर्शन को लेकर रंगमंचीय मुहावरे में विचार विमर्श किया गया है। नाटक में यद्यपि गांधी के नाम की कहीं कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन तब भी जिस तरह से घटनाक्रम के भीतर से नाटक के कथानक की बुनावट तैयार की गई है, उससे साफ जाहिर हो जाता है कि ये उन्हीं के बारे में है। नाटक में कुल जमा 4 पात्र हैं और उनमें से एक को हत्या की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन वो अपने आप में आश्वस्त नहीं है कि वो इस काम को पूरा कर पाएगा या नहीं। उसे अपने उद्देश्य की पूर्णता में विश्वास दिलाने के लिए बाकी तीनों साथी मौखिक स्तर पर एक मुकदमे की रचना करते हैं और अंततः उस मुकदमे के फलस्वरूप एक अदृश्य व्यक्ति अथवा आकार की हत्या करते हैं। आशय यही है कि मुकदमे के बहाने से गांधी के विचारों, मूल्यों और सिद्धांतों की हत्या करना, एक तो अपने कलेवर के कारण, दूसरे कम पात्र संख्या के कारण, तीसरे नारी पात्र की अनुपस्थिति के कारण और अंततः बहुत ही कम मंचीय साधनों की सुविधा के बिना भी खेले जा सकने के कारण इस नाटक को रंगकर्मियों के बीच काफी लोकप्रियता मिली। विशेष रूप से कॉलेज के छात्रों और शौकिया संस्थाओं के बीच इसकी मांग लगातार बनी रही। यद्यपि ये भी सच है कि अपने कथ्य में गांधी के परिप्रेक्ष्य में ये नाटक उस वक्त काफी ताजगी का एहसास लेकर आया था, लेकिन अपने शिल्प और संरचना में अपने से पहले के भी बहुत से नाटकों की याद दिलाता है। विशेष रूप से अल्बेयर कामू के नाटक द जस्ट असेसिन अथवा जायज हत्यारे का नाम लिया जा सकता है। इसी तरह विजय तेंदुलकर का नाटक खामोश अदालत जारी है, जिस जर्मन उपन्यास डेंजरस गेम पर आधारित है, उसमें भी इसी नाटकीय संरचना का इस्तेमाल किया गया है। इसी से मिलता जुलता एक और नाटक है शंकर शेष का फंदी। पिछले लगभग 60 सालों में हत्या एक आकार की के बाद हिंदी में ही बहुत से नाटक लिखे गए हैं और उनका मंचन भी होता रहा है। मसलन सुशील कुमार सिंह का बापू की हत्या 1000वीं बार, नंद किशोर आचार्य का बापू, राजेश कुमार का गांधी ने कहा था। कन्नड़ में 30 साल पहले प्रसन्ना ने गांधी नाम से एक नाटक की रचना की थी। इधर अभी हाल में मोहन महर्षि ने महात्मा गांधी और नेहरू के पत्रों पर आधारित एक नाट्य प्रस्तुति बापू शीर्षक से ही तैयार की थी। साहित्य के क्षेत्र में गिरिराज किशोर ने महात्मा गांधी के अफ्रीका प्रवास के दिनों को लेकर एक बहुत ही बड़ा उपन्यास पहला गिरमिटिया लिखा था। गुजराती में दिनकर जोशी का उपन्यास बहुत पहले से मौजूद है और उस पर आधारित गांधी बनाम महात्मा शीर्षक से गुजराती, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में लगातार अलग अलग अभिनेता अभिनेत्रियों के साथ प्रदर्शन होते रहे हैं। इस उपन्यास में महात्मा गांधी के जीवन से संबद्ध एक दूसरे पहलू को उठाया गया है और वो है गांधी के सार्वजनिक जीवन और पारिवारिक जीवन के आपसी अंतर विरोध, विशेष रूप से उनके सबसे बड़े बेटे हरिलाल के साथ वाद विवाद और संवाद का अंतरंग संसार। इसी तरह से फिल्मों की दुनिया में महात्मा गांधी बार बार विषय वस्तु के रूप में आते रहे हैं। हम रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी का उल्लेख पहले ही कर चुके हैं, जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असाधारण प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इससे पहले भी हमारे यहाँ गांधी को लेकर कई फिल्में बन चुकी थी। एक फिल्म 5:30 के बारे में पहले से हत्या एक आकार की वाले प्रसंग में चर्चा हो चुकी है। एक और फिल्म पट्टा भी रमैया ने 9 Hours to Rama बनाई थी, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई। अभी अभी फिरोज खान की फिल्म बापू माई फादर दर्शकों के सामने पहुंची थी। इसी बीच श्याम बेनेगल की एक फिल्म द मेकिंग ऑफ महात्मा भी आई, जिस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। चाहें तो यहाँ एक और फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई को भी साथ में जोड़ सकते हैं। यद्यपि ये सीधे सीधे उनकी जिंदगी पर आधारित नहीं है, लेकिन अपरोक्ष रूप से पूरी फिल्म उन्हीं के सिद्धांतों को लेकर लड़ी गई लड़ाई की जीत से संबंध रखती है। इसी तरह से एक नाटक मैं नाथूराम गोडसे बोल रहा हूं मराठी रंगमंच पर बहुत चर्चित हुआ और जिसका काफी विरोध भी हुआ, क्योंकि नाटक की विषय वस्तु गोडसे के कथन को सही साबित करती हुई प्रतीत होती है। यही नाटक गुजराती में इससे भी पहले से हो रहा है और अजब
अचरज की बात यह है कि उस पर कभी किसी विवाद की नौबत नहीं आई। इधर फिर एक फिल्म हमारे सामने आई और वो है जानू जानू बरुआ द्वारा निर्देशित और अनुपम खेर द्वारा अभिनीत और निर्मित मैंने गांधी को नहीं मारा। मुझे मराठी के एक और नाटक को भी पढ़ने का मौका मिला जिसमें केवल दो मुख्य पात्र हैं और वे हैं गांधी और अंबेडकर, और दोनों एक दूसरे के विचारों को लेकर बहस करते हैं। इसी कड़ी में असगर वजाहत के नाटक गांधी@godse.com को भी शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटक हो, फिल्म हो, साहित्य हो, गांधी बार बार इन विधाओं में लौटते रहते हैं। अपने आलेख के शुरू में हमने इस बारे में काफी चर्चा की थी कि गांधी इस दुनिया में क्यों लौट कर आते जाते रहते हैं, और हमने आज तक के समय और समाज में गांधी की प्रासंगिकता पर विचार विमर्श किया था। मुझे लगता है कि प्रासंगिकता से भी ज्यादा हमें इस बात की जांच पड़ताल करनी चाहिए कि आखिर उनकी अपनी जिंदगी में ऐसा क्या है जो नाटक और फिल्म से जुड़े रचना कर्मियों को प्रभावित करता है। यूं तो एक वक्त में गांधी ने अपने आचार व्यवहार और सिद्धांतों से मात्र अपने देश के ही नहीं वरन पूरी दुनिया के जनमानस को झकझोर डाला था, और आज भी पुनः परोक्ष अपरोक्ष रूप से यही हो रहा है। ये स्वाभाविक है कि रचनाकार को अपने स्रोत के लिए वही सामग्री ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करती है जो अपने आप में बेहद नाटकीय हो, लगातार उतार चढ़ाव से भरपूर हो और सीढ़ी दर सीढ़ी अंतर विरोधों को अपने साथ समेटे हुए हो। मैं समझता हूं कि गांधी का जीवन भी इसका अपवाद नहीं वरन आदर्श सामग्री का सबसे बड़ा उदाहरण है। यदि हम गहराई में ना भी जाएं तो भी सतही तौर पर उनके जीवन की 3-4 चिर परिचित घटनाओं दुर्घटनाओं के विषय में चर्चा करने से बात साफ हो जाएगी। मसलन बचपन में बीड़ी सिगरेट पीने और झूठ बोलने के प्रसंग हो, सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखने का असर हो, युवावस्था में अफ्रीका प्रवास के दौरान प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से बाहर धकियाए जाने की घटना हो। ये सारे प्रसंग एक ऐसे आदमी का चित्र प्रस्तुत करते हैं जिसका सारा जीवन नाटकमय रहा है। यदि इसमें हम स्वयं महात्मा गांधी द्वारा उल्लिखित ब्रह्मचर्य के प्रयोगों को भी शामिल कर लें तो सहज ही ये सब किसी नाटक, फिल्म अथवा साहित्य रचना के लिए अपने आप में काफी है। मेरे विचार में नाटकीयता से भी बड़ी एक और चीज है जो गांधी को कला रचना के केंद्र में लाने के लिए जिम्मेदार है, और वो है गांधी का हम जैसा ही एक आम आदमी होना। गांधी ना तो पौराणिक पुरुष हैं, ना किसी लोक कथा या कहानी के नायक हैं, और ना ही मध्यकाल के ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं। देखा जाए तो वो हमारे अपने समय के कालखंड में इतने निकट हैं कि हम उन्हें जैसे छू सकते हैं, उनकी आवाज को सुन सकते हैं और उनकी सांसों की गर्माहट को महसूस कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये भी उतना ही बड़ा सच है कि उनका जीवन मृत्यु भी मिथ, लोक कथा अथवा फंतासी में रूपांतरित होना शुरू हो गया है। कुछ कुछ अमिताभ बच्चन के इस शताब्दी के महानायक बनते जाने वाले अंदाज के समान। ये बात किसी तरह की तुलना के संदर्भ में हम नहीं कह रहे हैं, सिर्फ लोकप्रियता के आयामों के संदर्भ में ही कह रहे हैं। शायद यही कारण है जो गांधी को कथ्य के रूप में चुनने के लिए रचनाकार को लगातार उकसाता रहता है। मुझे एक और भी बड़ा कारण समझ में आता है, और वो है गांधी के बहाने से स्वाधीनता संग्राम के 50-60 वर्षों के लंबे इतिहास के भीतर से होकर गुजर जाने का अनुभव। अकारण नहीं कि हिंदी साहित्य और संभवतः दूसरी भारतीय भाषाओं में भी पिछले 50 सालों में जो भी बड़ी रचनाएं सामने आई उनके केंद्र में स्वाधीनता संग्राम और उसके साथ साथ गांधी भी मौजूद हैं। यशपाल का झूठा सच हो, भगवती चरण वर्मा का भूले बिसरे चित्र हो, कामता नाथ का काल कथा हो, हम बार बार उस कालखंड को छूते हुए गुजरते हैं, और जाहिर है कि वहां गांधी अथवा उनके मूल्यों और सिद्धांतों की उपस्थिति हमेशा रहेगी। अभी तक हमने गांधी के परिप्रेक्ष्य में जितनी भी रचनाओं का जिक्र किया है उन सब में एक बात समान है, और वो ये कि किसी भी रचना में
उन्हें महिमा मंडित करने की कोशिश नहीं की गई है और इसीलिए शायद ये रचनाएं बहुत दिनों तक अपना असर कायम रखेंगी। यदि देखा जाए तो इसकी तह में गांधी के प्रति उस उदासीनता को रेखांकित किया जा सकता है जो 1950 से 1980 तक हमारे देश और समाज में उनके प्रति छाई रही। अर्थात यही वो समय था जब गांधीवादी चिंतन का बहुत बुरी तरह से अवमूल्यन हुआ और समाज में नई नई मिली आज़ादी के बाद अचानक की सुख सुविधाओं से लैस होकर विलासिता की जिंदगी जीने की तरफ पहल हुई, जो समय के साथ साथ बढ़ती चली गई। ऐसे समय में यदि गांधी को देवता बनाकर पूजा नहीं गया तो एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि यदि ऐसा हो गया होता तो उस दौर के बाद आने वाली अलग अलग विधाओं की रचनाओं में भी उसका प्रभाव पड़ता। यही कारण है कि आज यदि गांधी ज्यादा प्रासंगिक लगने लगे हैं तो ये अपने आप में एक सहज परिणति है। यहाँ पर तुलनात्मक दृष्टि से एक अध्ययन की ओर संकेत किया जा सकता है। 19वीं 20वीं शताब्दी में जितने भी विचारक, समाज सुधारक और सिद्धांतकार हुए, उन्होंने जिन मूल्यों की स्थापना की उनका परीक्षण सबसे पहले स्वयं अपने संदर्भ में किया। इस दृष्टि से हम महात्मा गांधी, मदर टेरेसा के काम का एक साथ अध्ययन कर सकते हैं। गांधी के जीवन का सबसे विवादास्पद पक्ष उनके सेक्स संबंधी प्रयोगों को लेकर रहा है, लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि जितने खुलेपन के साथ उन्होंने अपने इन प्रयोगों के बारे में लिखा है, उनके बारे में लिखे गए नाटकों, उपन्यासों, कहानियों अथवा फिल्मों में शायद ही उनके इस पक्ष को लेकर कहीं कोई चर्चा हुई है। लोग उनको लेकर सही या गलत पर तो चर्चा करते हैं और उन्हें कटघरे में भी खड़ा करते हैं, लेकिन उनके साहस या कहें कि दुस्साहस पर कभी कोई गंभीर विमर्श कहीं दिखाई नहीं पड़ता। आखिरी 6 लाइनें। क्या यह एक अंतर्विरोधी स्थिति नहीं है कि हम गांधी के इन प्रयोगों की आलोचना तो करें, लेकिन उन पर खुलकर कोई वक्तव्य देने से कतराएं? इसीलिए गांधी पर आई ढेर सारी रचनाओं के बीच मुझे अभी भी किसी उस रचना का इंतजार है जो अपने विषय की स्रोत सामग्री को गांधी के इन्हीं प्रयोगों पर केंद्रित करे। इसका यह अर्थ कदापि न लिया जाए कि मैं बाकी दूसरी रचनाओं के महत्व को कम करके आंक रहा हूं। शायद इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है कि रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी सचमुच में एक ऐसी कृति है जिसने पहली बार आज़ादी के बाद गांधी को हमारे लिए, हमारे समय के लिए और हमारी अपनी पहचान के लिए व्याख्यायित किया। और उससे भी बड़ी बात यह कि उसी अंग्रेज सत्ता के एक फिल्मकार के माध्यम से जिसने गांधी जैसे व्यक्तित्व को उपहास का पात्र बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। धन्यवाद। इससे पता चलता है कि अंकुर जी समय के ऊपर कितना ध्यान देते हैं। ग्रेट। या अंकुर जी को जल्दी जाना है, तो मैं सोचता हूं अगर कोई सवाल है उनके लिए तो अभी पूछा जाए। 2-3 चीजें बहुत उभर कर आया है। एक तो गांधी अभी भी लिविंग एक जिंदा आदमी के तौर पर देखा जाना चाहिए। दूसरा, उसके विपरीत देख रहे हैं कि उनको लेकर मिथक बहुत बन रहा है। तीसरा, देखते हैं कि सिर्फ नाटक में, कुछ फिल्मों में भी उनको महिमा मंडित नहीं करने की कोशिश है। मतलब इवैल्यूएशन की एक कोशिश बराबर जारी है। So that is the contribution, I suppose, of literature and theatre. Particularly, I would say theatre. Theatre में बहुत इस तरह का छानबीन हुई है। और चाहे जितना भी कंट्रोवर्सी हो गांधी के ऊपर, लेकिन एक चीज का दाग तो सभी देते हैं कि उनकी साहस की कमी नहीं है। वो साहस is at the backbone of his Satyagraha. So how to face the truth, the reality, the truth within quotes. I think that is the challenge today for all of us. And as he says, that we are waiting for the play which will face the truth of Gandhi. Yeah, I think next, please, if you have anything to ask.
गुड जी। Please. ऑथेंटिक ओरिजिनल विचारों और संदर्भों में हम जो समाज का एक डायनामिज्म होता है उसमें मिथक का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो नाटक या फिल्म या दूसरी बहुत सारी साहित्य गांधी के ऊपर जो लिखा गया है उसमें जो ये एक क्रिएटिव डिपार्चर या एक एंगेजमेंट के थ्रू नए तरह के मिथक को गढ़ना गांधी को लेके उसके संदर्भ में क्या देखते हैं, क्योंकि समाज का जो आम लोग हैं वो शायद गांधी से रिलेट करता है इन मिथकों के आधार पे, इन लेजेंड्स के आधार पे। तो उसको आप कैसे देखते हैं सर? एम्फसाइज करने की कोशिश की कि समाज में जो एक मिथ बनते जा रहे हैं और शायद काफी पहले बन गए थे, और साहित्य और कला, फिल्म, जितने भी ये क्रिएटिव माध्यम हैं, इनमें अभी भी वो चीज बची हुई है कि हम एक कॉमन आदमी, उनकी पूरी आत्मकथा को हम लोगों ने खुद मंचित भी किया है और उसका एक एक चैप्टर पढ़ने के बाद लगा कि हर आदमी के साथ ये सारी चीजें घटित होती हैं, लेकिन एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट वो क्या डिसीजन ले रहा है, तब एक उसको वहां जाने का मौका मिलता है। एक बार तो वो अफ्रीका छोड़ के वापस आ गए थे, मुकदमा छोड़कर। पहला मुकदमा अदालत में लड़ने में पूरी तरह से फेल हो गए थे, लेकिन फिर कोई संयोग मिल गया दक्षिण अफ्रीका जाने का, और कहीं कोई मन में दूर दूर तक नहीं था। तो ये जो अनायास चीजें आती चली गई, उनको हम कैसे फेस करते हैं, शायद इसी में सारा खेल है, और वही बाद में मिथ बन गया। आज तो मतलब पूरे का पूरा अब मिथ ही है, जैसे कहना चाहिए अरे ये सारे चमत्कार लगते हैं उन्होंने जो किया है, लेकिन वो उस वक्त उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा, ये अच्छा पॉइंट है कि बहुत एक आम आदमी, तभी तो सारा, इसी को तो हमारे यंग पीढ़ी जो 70-80 में फिल्में आई हैं, और खासकर अमिताभ बच्चन का जो दौर आया, उसमें उन्होंने एक बिल्कुल दूसरे अंदाज में उठा दिया कि आम आदमी ही कर सकता है, एक आदमी 50 लोगों को मार सकता है, और ये कर सकता है, वो कर सकता है। आप देखो, उसका पूरा एक नया वर्षन दे दिया, फिल्मी वर्षन, एक चमत्कार बनाकर छोड़ दिया। वो अपने आप में चमत्कार नहीं है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद इसी में उस आदमी की ग्रेटनेस है। और फॉर दैट मैटर जितने भी बड़े लोग हम देखें तो वो हम ही जैसे लोगों के अंदर से आज, मतलब मैं दूसरे अर्थ में देखता हूँ, हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में या बाहर जब हम जाते हैं, पूछते हैं अरे सर नसीर आपके साथ पढ़ता था, अरे पढ़ रहा था भाई, वो भी डॉर्मेट्री में रह रहा था, 6-6 लोग एक कमरे में रहते थे। तो आज ये परसेप्शन बन गया है, हम लोगों के लिए वो कुछ भी नहीं है, हम लोग आज भी उससे ऐसे ही बात करते हैं। या अनुपम खेर या पंकज त्रिपाठी को किसी वर्कशॉप में जाते पता चला वो आया हुआ है, सर हम तब मानेंगे अगर आप उसको बुला लेंगे फोन करके। तो ठीक है, मैंने फोन किया, मैंने कहा पंकज ऐसा है, यहाँ तो मेरे पार्टिसिपेंट जो हैं वो विश्वास करने को तैयार नहीं है, मैं तो बोलता रहता हूँ भी ये भी मेरा स्टूडेंट है, वो भी मेरा स्टूडेंट है, कहता मैं अभी आता हूँ। तो वो हाजिर हो गया, वो लोग हैरान रह गए। तो ये चमत्कार मतलब ऐसे बन जाते हैं। तो ये अनुभव है मेरा, तो मतलब उस तरह का व्यक्तिगत अनुभव है। इन सब लोगों के साथ हम लोग किचन में सोए हैं और रिफ्यूजी मार्केट का खाना खाते रहे हैं। अब आज वो उनको सब याद है, अपने आप में वो बिल्कुल नहीं बदले, लेकिन एक आम दूर से जो देख रहा है।
इंटरेस्टिंग है कि मिथक बनता भी है, मिथक को तोड़ा भी जा सकता है किसी न किसी तरह से। हाँ तो जाहिर है, हाँ। तभी तो फिर एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? आपसे परमिशन चाहूंगा, फिर मुझे आज्ञा दीजिए। एक चीज आज्ञा तो है आपके लिए लेकिन हाँ प्लीज। अंकुर जी से कि गांधी पे बहुत सारे फिल्म बने, बहुत सारे प्ले हैं। एटनबरो का गांधी एक समय था जो कि काफी आ गया, और हम अपने स्टूडेंट्स के बीच कई बार उसको एक्सप्लेन करते हैं कि एक तरह से गांधी ने पूरे फ्रीडम मूवमेंट के बारे में आइडिया दे दिया। लेकिन ऐसा लगता है कि लगे रहे हो मुन्ना भाई टाइप की फिल्म बना, ठीक क्या गांधी पे नहीं ऐसी, लेकिन वो जो एक इम्पैक्ट छोड़ा वो पप कैसे नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, वो तो रविकांत जी का विषय है और उसमें वो बहुत अच्छा बोलते हैं। ये तो लगता है इस तरह से क्रिएटिव आर्ट है इसमें कि डायरेक्ट किसी के बायोग्राफी पर बेस नहीं हो, किसी पर्सनालिटी वो ज्यादा अच्छा उनमें वो एक ऐसा बन के आया है कि बिल्कुल बिल्कुल तो हमको लगता है तो किसी फिलोसफी और किसी के आइडियोलॉजी को लोगों तक ले जाने हमारे साथ से ज्यादा आपका बिल्कुल कहना सही है। बिना गांधी की जीवनी को लाए और एक पॉपुलर तरीके से वही फिल्म इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हुई है। अदरवाइज गांधी पे जितनी भी ज्यादातर तो जीवनी परक बनी है, तो वो बनी हैं, अच्छी फिल्में हैं, लेकिन उस तरह की पॉपुलैरिटी उनमें पैदा नहीं हुई कोई, जो सवाल इन्होंने भी उठाया था कि वो पॉपुलर क्यों नहीं हो पाती। एक तरफ तो गांधी की पॉपुलैरिटी है, दूसरी तरफ इन क्रिएटिव उनकी है, लिटरेचर फिर भी काफी हद तक उसमें पॉसिबिलिटी है वो पॉपुलर हुआ भी है। झूठा सच ले लीजिए, या ये भूले बिसरे चित्र हो, और पहला गिरमिटिया आप पढ़ के देखिए, 900 पृष्ठ का नॉवेल है। मैं तो एक बार पढ़ना शुरू किया, मैं उसको छोड़ ही नहीं पाया। 3 दिन लॉकडाउन भी था, मैंने कहा बहुत अच्छा काम है, इन्हीं दिनों खत्म कर लो पढ़ने का काम सारा। तो वो बिल्कुल आपका कहना सही है कि उसको उस तरह से अभी इस्तेमाल बहुत कम किया गया है। तो अंकुर जी और कहीं अभी जाना है तो नहीं, मैं भी कोई अपनी व्यक्तिगत इच्छा से नहीं जाने में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मुझे रविकांत जी को भी सुनना था, लेकिन एक बार उनको सुन लिया। आजकल ये हिंदी सप्ताह में जैसे यजमान बुलाए जाते हैं, तो रविकांत आजकल बिल्कुल परमानेंट हमारे वो हैं, वक्तव्य देने वाले। वो हर हाँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपने आप से मतलब छूट ले सकता हूँ कि आज छोड़ देते हैं। थैंक यू, चलिए, धन्यवाद। हाँ so let us move on to the next speaker, Smita. I think okay. Yes, sir. I'll just take a minute to introduce our speaker, Dr. Ravikant. Dr. Ravikant is a bilingual historian, writer, and translator. He read, researched, and taught modern Indian and world history in various colleges of Delhi University before joining the center's Sarai program at its inception in 2000. He is the author of Media Ki Bhasha Leela and Vani Prakashan. Dr. Ravikant's doctoral work, Words in Motion Pictures, a social history of language of Hindi cinema, navigated intermedia sites such as print, broadcasting, web, in an effort to offer creative connections between these media forms and their diverse publics. Sir also works for the Indian Languages Program at CSTS and its peer-reviewed journal Pratimat. We are so grateful to have you here with us, sir. So Smita,
Sir, just a minute. I will also like to request Professor Mangalam to facilitate Dr. Ravikant, sir. Um, Good morning, everybody. And it gives me great pleasure to be here, part of the Gandhi Study Circle at Aryabhat College. And I'm thankful to Dr. Jha and the organizing committee for inviting me. This is very much a work in progress and a new area for me. I work as has been indicated largely in popular cinema, melodrama, and star studies, but here goes. Yeah, thank you. So this is a kind of a short presentation, almost a survey kind of a presentation that I present to you today. And I would like to begin with a quote from Ashish Nandi, where he says, this is Gandhi, after Gandhi, after Gandhi. It's a short essay that he had written. Contemporary politics is not about the truths of history. And it's interesting because that's where Dr. Ghosh began with. Ankuji spoke about it. Contemporary politics is not about the truths of history. It is about remembered pasts and the problems of fashioning a future based on collective memories. For better or worse, Gandhi seems to have entered that memory. And I think since yesterday and today, across many sessions, what you are perhaps attempting to do is capture fragments of those memories that keep surfacing and resurfacing at various points in our own histories and in our own contexts. I have sort of focused largely on the 1960s period. And it's very interesting when you track what was happening in the film industry or ideas about making films on production of films on Gandhi. And this was quite a sort of interesting period in that sense. And there seems to have been a lot of attempts at making a film on Gandhi, mostly projects that were initiated by non-Indians. And there, of course, was a lot of interest on Gandhi post his assassination in 1948. So the well-known director Gabriel Pascal had proposed a biopic in 1951. Both Pandit Nehru and the Gandhi sort of family were quite interested in that particular project. लेकिन उस वक्त भी प्रेस में, पार्लियामेंट में, काफी फिल्म मैगजीन्स में इस प्रोजेक्ट का बहुत क्रिटिसिज्म चला था. 50s was also a time when people were not really willing or ready to accept this kind of a biopic project on the Mahatma. In 1954, the project was just left unfinished because of Gabriel Pascal's death. And there is also, so when you follow those debates that were happening in the film magazines of the time, a lot of discussion was happening on the fact that we could not desecrate Gandhi's memory. So there was this idea about Gandhi inhabiting this sacral space, a kind of a sacred memory, which should not be brought out through a filmic representation. People were not sure how Gandhi would be represented. Later, 1954, Preminger wanted to make a film called The Life of Mahatma. 54 में एक और film announce हुई थी, गांधी पथ. 60 में लॉयड यंग ने एक फिल्म प्रपोज की थी. लेकिन ये सब प्रोजेक्ट्स काफी डिस्कशन चला था. कुछ फाइनेंसियर्स, प्रोड्यूसर्स इन फिल्म्स को बनाने के लिए राजी हुए. इंडिया में people were not very happy, so people did not want these films to be made. So both alongside the idea of Gandhi inhabiting this kind of a sacred space, we also have this anxiety about desecrating Gandhi's memory.
and Gandhi's image. So none of these sort of came to anything at that point in time. इसके बाद जब हम देखें, अंकुर जी ने इस फिल्म की बात की है, लेकिन एक्चुअली ये फिल्म बनी थी और ये रिलीज हुई थी 1963 में. दिस फिल्म वाज मेड called 9 Hours to Rama, and it was directed by a Hollywood director called Mark Robson. He had started shooting in 61, 62. इंडिया में बहुत शूटिंग हुई थी राजपथ पे, मतलब आज के कर्तव्य पथ पे शूटिंग हुई, बिरला हाउस में शूटिंग हुई थी उस वक्त. And it was, the question can be asked, why is it that we had a film on Gandhi, but made by a Hollywood director? But eventually the film was banned in India post its release. And the reason, of course, was a very, very controversial subject matter. But interestingly, the government of India at that time had funded the project. It was one of the financiers of the project. ये एक नॉवल लिखी थी स्टैनली वोलपर्ट ने, उनके नॉवल के ऊपर ये फिल्म बनाई गई थी. And the film focuses on the last hours before Godse assassinates the Mahatma. And the controversy in India, which was led by K. Abbas, the very well-known film critic and journalist of its time, पार्लियामेंट में बहुत डिबेट हुआ था इस फिल्म के बारे में. तो हम पार्लियामेंट डिबेट की जब पूरा वो देखते हैं, all the proceedings of the discussion that was happening on the floor of the house, बॉम्बे में ये अब्बास जी ने लीड किया था इसके अगेंस्ट क्रिटिसिज्म. और उसके बाद बाबूराव पटेल थे, वो फिल्म इंडिया के एडिटर थे. ही वाज आल्सो वेरी इन्फ्लुएंशियल वॉइस इन इंडियन सिनेमा एट दैट पॉइंट इन टाइम. इन दोनों ने काफी मुहिम छेड़ी थी इस फिल्म के अगेंस्ट. Finally, the Indian government did not allow the film to be released in India. It was banned in India. It had a worldwide release, but it did not do very well, even in the world market. So you can see from the poster of the film that one of the charges that Abbas and Patel had against the film was casting of Horst Buckles, who was cast as Nathuram Godse. And the entire film is a flashback. He is in Delhi just on the day, the night before, when he lands in Delhi, and he starts thinking about his life. There were a lot of historical inaccuracies about Godse's life in the film, since it was supposedly based on the novel. It was a melodramatic film, charges of casting a handsome actor as Godse, and the minister on the floor of the house was actually made to issue an apology, and so on and so forth. So eventually this film disappears from public memory, and we hardly ever talk about this particular film now these days. Many of us do not even know that this particular film was made much before Richard Attenborough made Gandhi. And the context, interestingly, and this is Attenborough has written about it, is actually the 1963 film, which was made by Mark Robson. And this was a call that he gets in 1963 when the film has just been screened for the Indian High Commission in London. And Motilal Kothari, who was serving in the commission at that time, had telephoned Richard Attenborough in the morning. And he sought a meeting with him because he said, "This is a matter of great urgency. It is regarding an undertaking of great confidentiality." So Kothari was very instrumental, along with Nehru, in getting Attenborough on board. But they speak to Attenborough and initiate that project in 1963, but the project takes almost 20 years to materialize. And the context for the making of Attenborough's Gandhi is, of course, around 9 hours, the anxiety that people in India, the government of India had been facing because of the Robson film. And eventually the film took 20 years to be finally made. Why I'm drawing this attention to this kind of a production history of this film is that we all know this film. Perhaps many of us have seen it over the years, and but it's important for us to understand the particular manner in which this film ultimately got made and produced.
And of course, at that point, when Attenborough came on board, he was very interested in making the film. But film finances were reluctant to invest money because the memory of 9 hours and the fiasco that it had created still lingered. Eventually, Indira Gandhi came on board, and the National Film Development Corporation gave a lot of money to the investors, and the film was made. So these are some stills from the film. Attenborough holding the Oscar. Some of you might know that that the film won 8 Oscars, despite a lot of historical inaccuracies. और इन historical inaccuracies के बारे में गांधी जब भी फिल्म स्क्रीन होती है या बात की जाती है तो उसके बारे में बहुत डिस्कशन रहा है. But despite the fact that this was taking a lot of liberties, and that's the question that came up in terms of creating this kind of a mythical aura around Gandhi. This film, of course, created a hagiography around Gandhi. And one of the things that Attenborough did not do was to focus on his life before he becomes Gandhi and comes to India and starts leading the freedom movement here. So you can actually look it up. A lot of discussions are available on the film. This film supposedly acquired a kind of the status of a fountain of truth, but historians know and film scholars know and people who have studied Gandhi know that the filmmakers had taken a lot of liberty. But Attenborough had a curt reply: we were not telling the story of the Indian independence struggle. And I'm very interested because Satish ji has just said that it's one way of introducing the idea of the freedom struggle and the mass movement that Gandhi created for the younger generation. लेकिन जब scholarship की बात आती है तो तब हम वहाँ देखते हैं कि Attenborough खुद कह रहे हैं that we were not telling the story of the Indian independence struggle or even that of the Congress party. We were telling the story of Mahatma Gandhi. अगर आप फिल्म देखें आपको याद होगा कि फिल्म शुरू होती है उसमें क्रेडिट सीक्वेंस आता है और उसमें एक डिस्क्लेमर दिया जा रहा है फिल्म के पहले सेकंड या थर्ड शॉट है वो: नो मैन्स लाइफ कैन बी एनकम्पास्ड इन वन टेलिंग. देयर इज नो way to give each year its allotted weight, to include each event, each person who helped to shape a lifetime. What can be done is to be faithful in spirit to the record and try to find one's way to the heart of the man. I think that is what this film attempted to do, and it succeeded. So even when you look at the posters, you can see how Bapu has been sort of created for us on screen in this first major biopic that created so much of buzz around the world. It's become part of public memory. It is listed in many of the anniversary screenings and film festivals that keep happening, and gets top listing in many online searches that you might be doing. So what is important about this film in the 1980s is that it resonated with discourses and context of the 1980s here and elsewhere. And we also must remember that the film was declared tax-free, and the government also involved in free screenings and charity shows. So it has really become part of our public memory in how we access Gandhi through a popular film in that sense. So I want to move on now to give you a sense of, Ankurji mentioned some of these films, taxonomy of Gandhi on Hindi screen, if we were to look at that. So you can sort of have films that attempt to humanize the Mahatma, where they're using the biopic as a genre. You can think of Benegal's Making of Mahatma. You can think of Abbas Khan's Gandhi, My Father. They are films which can also try to represent or negotiate with the traumatic memory of the partition and Gandhi's assassination. And in this, you can have Kamal Hassan's Hey Ram and Maine Gandhi Ko Nahi Mara, directed by Janu Barua. There can be also biopics where Gandhi sort of appears
because these are biopics on his ideological opponents or contemporaries. So films on Bhagat Singh, for instance, where there are a lot of references to Gandhi and his ideology and the differences that they had. Baba Saheb Ambedkar, Veer Savarkar, and Sardar on Sardar Patel. So these are films that sort of give us a sense of how the popular films were also negotiating their own relationship to Gandhi and what he stood for. And of course, Lage Raho has already been mentioned. And Lage Raho is considered to be a very, very interesting film because it almost invented Gandhi as a hegemonic brand for the contemporary consumerist times. And there are a lot of discussions on this particular film for those of us who work on popular cinema. So let me just move on to the next bit where we have these particular films where he is seen in biopics and appears as a father figure. And Ankuji also mentioned some of the plays in which this particular manner of reimagining Gandhi comes up. Mm, the first film that I want to draw your attention to is The Making of the Mahatma, made in 1996 by Shyam Benegal. And for me, this film is a counterpoint to Attenborough's Gandhi because this focuses on his life in South Africa, which is missing from Gandhi. So it sort of becomes a kind of coming together of his entire life story. And the film stops at the point where Gandhi is transformed into the Mahatma. And this is the last scene. Gandhi, we see the most popular image we have of Gandhi with a staff in hand is showing marching into the sun, setting in the vast sea. And that signifies his return back to India. And there is a very buoyant Vande Mataram soundtrack that is there in the last credit sequence, which was sung by Usha Uthup. So finally, Gandhi, the making finally merges with with the Mahatma of the Gandhi in this film. The next film that is important in this genre could be Gandhi, My Father. And this is primarily based on a play, Mahatma versus Gandhi, also on Dinkar Joshi's Gujarati novel, Prakasho Pachayo, and other sources of reference like Chandulal Dalal's Harilal Gandhi Alive and Gandhiji's Last Jewel, Harilal Gandhi. And of course, this is from Harilal Gandhi's perspective, the eldest son's point of view. Very difficult subject matter. And yet, when we see the film, we feel for the Mahatma and the kind of traumatic relationship that he had with his eldest son. And I want to draw your attention to these two posters, which I find very, very fascinating. One family's tragedy was the price of a nation's freedom. And I think it's such an evocative way of summarizing his life for us in terms of what he went through as a father and the life with his son. And the next one, it all began in South Africa 100 years ago. And look at the three little things that are there on the poster, alerting us to what it took for him to be this Mahatma figure. Then we can sort of move on to a film like Janu Barua. I am not discussing Hey Ram. I am assuming that some of you will be familiar with the Kamal Hassan film. But this is a very interesting film which Barua made in 2005, and the sort of plot revolves around Anupam Kher, who is a retired professor and is racked by guilt, and the family is unable to make out his psychological trauma, and he slowly starts believing that he killed Bapu. So this idea of a collective guilt at Bapu's assassination, which perhaps the nation was still trying to come to terms with. And there are a lot of there is a lot of scholarship that exists on both partition and Bapu's assassination, where scholars of trauma theory have suggested that that
for many years, the nation could not come to terms with either the partition, the trauma of the partition, and the assassination of the Mahatma. And hence, we needed to take some time to come to a point in our own history where we could begin having that conversation with ourselves. So this idea of collective guilt, of a kind of cultural catharsis, happens through this film. He hallucinates that he was responsible for killing Bapu, but ultimately he is able to be cured of this feeling. So the idea is that the kind of deeper schisms that are there in the society are hinted at. I want to sort of now move to the last bit of what I wanted to present to you. And I want you to think of the ideal of Antodaya through the next three examples that I'm going to take. And conceptually, I like thinking of the Derridian idea of ontology, where a range of ideas referring to the return or persistence of elements from social or cultural past appear almost like a ghostly present, like a specter to haunt our present and think about the future. This is a film which never had a theatrical release, but I really am very sort of personally, I find it very useful to think of. Made in 1982, this film was financed by the West Bengal government, and it is about the fight of a Dalit peasant sharecropper against the feudal landlord. And he fights a case against the landlord, and he wins the case. He wins the Panchayati Raj election. So this idea that the rise of the last person, or working towards the upliftment of the most depressed, poorest sections of people, which was very close to Gandhi's philosophy, gets highlighted here in a sort of referential manner. Then, of course, Munna Bhai, and we know about it, and this created the brand Gandhigiri for us. And you can see that what the film projected and how it became part of the public memory and public discourse. And the last film that I want to draw your attention to is again a film made in 2013 called Satyagraha. It's as apparent as that. Yet when you look at the discussions on Satyagraha, Prakash Jha repeatedly kept saying he was not making a film on Gandhi. He was not making a film on Anna Hazare. But the plot of this story where social activism and citizens protest against corruption to have a say in the body politic, I think remains very resonant and useful for us to think about. I'll sort of conclude here, and this is a short bibliography. As I said, this is a work in progress, so it has very rough edges at the moment, but thank you for having me here. Oh. Thank you, Smita. Yes. You give a kaleidoscopic idea well, about. It's a kind of a little short survey that. Yeah. And we will be waiting for the conclusion of your book. At some point. Yes, at some point. Work in Yes. progress, fine. The fascinating thing here I find is that how much liberty a creative persons can take. I think this can be debated. Yes, certainly. As you said, the historians, the Gandhi scholars might, about Attenborough particularly, there are many inaccuracies. So this point is a very urgent point of how much liberty one can take. I think we'll have discussion after Ravikant's. Yeah, that will be, yes. I think this joins together three of. Yeah. Please. So I think they need to connect it here, maybe. Yeah. We can connect it here. I will have to save it, sir. I do have.
Okay. Thank you so much, Satish sir. Professor Satish Jha, Satish sir, always for me. We've known each other since Hindu college days. He was my esteemed senior. And so when he orders me to come, I can't say no. I'm really happy. How much time do we have, sir? 20 minutes? 20 plus- minutes. plus Okay. minus. Okay. So that means that I don't have, I cannot show or say everything that I have to. Let me focus on something that have not been covered by Smita. I'll stay in the pre-independence period. That's a neat division of labor I have chosen for myself. And one sec, let me switch it off. Yeah. So the first thing that strikes everybody, हिंदी में बोलूं कि अंग्रेजी में? हिंदी में चलेगा। हिंदी में बोलूं? ठीक है। तो जब आप सिनेमा पे बात करते हैं और गांधी पे बात करते हैं, तो पहली चीज जो सबको जहन में उभरती है, वो ये कि गांधी सबसे ज्यादा फोटोग्राफ्ड और फिल्म्ड इंसान है धरती के। ठीक है, बड़ी बात है। प्रकाश मखदूम, जिनकी किताब को रेफर किया स्मिता ने भी, है ना, उसमें ये बात साफ तौर पर लिखी हुई है कि उनसे ज्यादा किसी को फोटोग्राफ नहीं किया गया। और साथ साथ ये भी उसी सांस में हम लोग को कह देना चाहिए कि गांधी सिनेमा के विरोधी थे, सिनेमा उन्हें पसंद नहीं था। लेकिन इतिहास वो नहीं है जो कि इंसान चाहता है और हो जाए। इतिहास दरअसल वो है जो इंसान के चाहने के बावजूद होता चला जाता है। So history is about unintended consequences. That's how I see Gandhi, Gandhi's take on cinema, गांधीगिरी इन सिनेमा। ठीक है, तो क्या है वो दौर जिसमें गांधी से बड़ा आइकॉन नहीं है? शाहरुख खान, सलमान खान जैसे लोग उस समय पैदा हो रहे थे, नए उभरते सितारे उस समय भी थे। कुंदन लाल सहगल जैसे थे, ए बिल्ली मोरिया जैसे थे, मिस गौहर जैसी थी, मिस माधुरी जैसी तारिकाएं थी। So there were, real stars emerging, especially after cinema started talking in 1931. ठीक है, लेकिन इन सब को साथ में कलेक्टिवली भी अगर आप जोड़ दें, एक साथ रख दें, तो उनकी लोकप्रियता गांधी जी की लोकप्रियता के बराबर नहीं। और सिर्फ गांधी जी नहीं, उस समय का हर राजनेता, हर पॉलिटिशियन जो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था, सिनेमा के सितारों से बड़ा था। सरोजनी नायडू जैसी नेत्रियां, है ना, रेकमेंड कर रहे हैं फिल्म को। अली ब्रदर फिल्मों को रेकमेंड कर रहे हैं, पटेल साहब रेकमेंड कर रहे हैं, या बाद में। इसलिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि गांधी जी को सिनेमा क्यों नहीं पसंद है। रॉबिन जेफरी ये बात कहते हैं ना, why the Mahatma did not like the movies and why does it matter, right? There's a journal article, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो इतने बड़े सितारे का सिनेमा को पसंद नहीं करना अपने आप में एक ऐतिहासिक दुर्घटना है ना, जिससे हमको मुखामुखम होना पड़ेगा। लेकिन अनइंटेंडेड कंसिक्वेंस, इसीलिए ये 30s में सिनेमा पे बहुत सारे जो विमर्श चल रहे थे, उसका एक कलेक्शन है, इसको पढ़िएगा जरूर। जमशेदपुर से ये छपा था और सेल्यूलॉइड चैप्टर वहां का था, और इसे एडिट किया था ध्रुव गुप्ता, वीरेंद्र दास शर्मा, और एडिटेड बाय श्रमिक बंदोपाध्याय, जो कि सिनेमा के बहुत बड़े नाम हैं।
और वहां पे कोलकाता की, ठीक है। इसमें एक चिट्ठी ख्वाजा अहमद अब्बास की है जो उन्होंने लिखी थी, किनके नाम से? बापू के नाम से। 1939 में फिल्म इंडिया में छपी थी। कौन है भाई ख्वाजा अहमद अब्बास? आज की जनरेशन को नहीं पता है, जो प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं उनको पता है। लेखक, उसी जमाने से एक्टिविस्ट, जिस जमाने से अलीगढ़ में पढ़ रहे थे, तभी वो उनको पता जब चलता है कि नेहरू जी जिस ट्रेन से गुजरने वाले हैं वो अलीगढ़ से होकर गुजरेगी, तो 2-4 स्टेशन पहले आके इधर चढ़ जाते हैं उस गाड़ी में, नेहरू के डब्बे में घुस जाते हैं यंग अब्बास, और नेहरू से बहस करते हैं कि आपको मतलब फर्स्ट क्लास में चल रहे, आपको शर्म नहीं आती? आप इस देश गरीब मुल्क के नेता हैं, ठीक है। ये बहस करते हैं। ऐसे अब्बास पूछते हैं गांधी जी से जाकर कि मुझे क्या करना चाहिए। पूरी दुनिया उस समय गांधी जी से पूछ रही थी जाकर, मुझे कौन सा करियर लेना चाहिए। इतने बड़े फिगर थे गांधी जी। तो अब्बास को गांधी जी ने कहा था कि भैया जो कर रहे हो, जर्नलिस्ट हो, जर्नलिस्ट बने रहो, अच्छा काम कर रहे हो तुम। तो उन्हीं अब्बास ने 1939 में नेहरू जी, गांधी जी को चिट्ठी लिखी, माय डियर बापू, सिनेमा इतना बुरा तो नहीं हो सकता जितना आप समझते हैं इसको। सिनेमा में सब कुछ वही घटिया ही नहीं है। सिनेमा को बहुत घटिया माना जाता था, उसमें अच्छे घरों की महिलाएं काम नहीं कर रही थी, ठीक है। मध्य वर्ग ने उसको बॉयकॉट किए हुआ था, इसलिए तवाइफें ही काम कर रही थी उसमें, एंग्लो इंडियंस ही काम कर रही थी, या फिर देविका रानी जैसी महिलाएं काम कर रही थी जिनका टैगोर खानदान से रिश्ता था। उनको कौन कुछ कह सकता था? तो ऐसे अपवाद लोग काम कर रहे थे, और उसमें इनका ये कहना महत्वपूर्ण था, यानी सिनेमा एक तरह से गांधी के खिलाफ भी खड़ा था, या गांधी सिनेमा के खिलाफ खड़े थे। सिनेमा अपने फॉर्मेटिव फेज, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि सिनेमा ने, चूंकि ये एक कमर्शियल मीडियम है, पॉपुलर सिनेमा, इसको बॉक्स ऑफिस से ही चलना होता है, इसको जनता के दरबार में ही सफल होना होता है। पॉपुलर सिनेमा, वहीं से उसके पैसे आते हैं। तो एक खतरा तो ये था सिनेमा के पास कि अगर आप मजदूर जैसी फिल्म बनाएंगे, जैसे प्रेमचंद ने लिखा था, तो बैन हो जाएंगे। अगर आप भक्त विदुर जैसी फिल्म बनाएंगे, जो कि गांधी को नकाबपोश, मतलब विदुर के कैरेक्टर में गांधी को पेश करने की कोशिश थी, तो वो अगर आप करेंगे तो भी वो फिल्म बैन हो जाएगी, भक्त विदुर। तो आप किसी और तरीके से, चतुराई से अपने मैसेज को, राष्ट्रवादी देशभक्ति के मैसेज को, ग्राम सुधार के मैसेज को, अंत्योदय के मैसेज को, अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ाई, डिग्निटी फॉर द हरिजन्स की लड़ाई को, चरखा को, खादी को, स्वराज को, स्वदेश को, सत्याग्रह को, अहिंसात्मक संघर्षों को, हिंदू मुस्लिम एकता को, यानी गांधी का जो भी आदर्श था उसको आप अपने ढंग से चतुराई से पेश करें फिल्मों में, ताकि गांधी गिरी जब हम कहते हैं तो सिर्फ वो आइकॉनोग्राफी नहीं है, वो इमेजेस नहीं है जो कि गांधी के हम देखते हैं उस समय के अखबारात में। गांधी सब जगह छाए हुए, खाली आप अखबारों को पलट करके उस समय का देख लीजिए, जो भी बात शुरू होती है खत्म होती है गांधी से ही शुरू होती है, ठीक है। डिबेट भी होता है तो गांधी को लेकर के ही होता है, उसी के, उन्हीं के फॉर या अगेंस्ट की सारी चीजें तय हो रही हैं, ठीक है। बाकी लोग भी, उनका भी महत्व उसी से तय हो रहा है। ऐसी स्थिति में वो सिर्फ आइकॉनोग्राफी नहीं है और सिर्फ गांधी गांधी नहीं है, बल्कि वो तमाम सिंबल्स भी गांधीगिरी के अंतर्गत आएंगे, जो गांधी ने स्पॉन किए, जो गांधी ने फेंके, बीज फेंके और जो बड़े होते चले गए, है ना। चरखा, खादी, विमेन, विमेन कौन फेयरलेसनेस की बात कर रहे थे अंकुर जी अभी, ठीक है। खौफ, अंग्रेजों के आतंक का खौफ, उनके डंडे का खौफ, उनके जेल का खौफ, वो सेंसर कर देंगे इसका खौफ, वो गांव के गांव पर जुर्माना लगा देंगे उसका खौफ, लोगों को सरेआम चढ़ा देंगे फांसी पर, पेड़ों से लटकाकर मार देंगे लोगों को, इसका खौफ। गांधी उस खौफ का इलाज थे। जब गांधी कोर्ट में घुस करके डिफाई करते हैं, है ना, और वहां पे एक पैरेलल भाषण देते हैं जैसे कि मौलाना आजाद भी करते हैं, तो गांधी की एक खासियत यह भी है कि गांधी ने ये तमाम सिंबल्स
पैदा किए और छोटे छोटे गांधी पैदा किए। गांधी हर कोई होना चाहता था उस समय जिस हद तक वो हो सकता, ये बड़ी बात थी। मैं भी गांधी कह सकते हैं आजकल की भाषा में आप। तो गांधी ने इतने गांधी पैदा किए। फिल्मकारों में भी ऐसे गांधी थे। फाल्के को ही ले लीजिए। जब फाल्के कहते हैं कि हम बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट देखना देखकर कि हम बनाएंगे स्वदेशी फिल्म। जीसस क्राइस्ट तो आपने बना दिया, ठीक है भाई, गोरों की फिल्म है, जीसस क्राइस्ट पर ही होगी। हम हिंदुस्तानियों की कौन सी स्वदेशी फिल्म होगी? तो उन्होंने बनाया बर्थ ऑफ क्या, श्री कृष्ण जन्म। श्री कृष्ण जन्म बनाई, ठीक है। राजा हरिश्चंद्र बनाई, विच इज द मोस्ट फिल्म स्टोरी इन फिल्म हिस्ट्री। इट्स नॉट देवदास। ये मजेदार चीज है। राजा हरिश्चंद्र तो पौराणिक कथाओं से के माध्यम से उस देश में गर्व, उस देश पर गर्व करने की सीख दी गई, जिस देश के बारे में कहा जा रहा था कि असभ्य है, बर्बर है, ये तो हमेशा न तो अपने लोगों को ठीक है, न खुद ही कुछ जानता है, वगैरह वगैरह वगैरह। सिनेमा का वो क्या नहीं चल रहा है। तो ऐसा करते हैं, हाँ ये कर दीजिए। और अगर इंटरनेट चल रहा है तो मैं सिर्फ 2 क्लिप छोटा छोटा दिखा देना चाहता हूँ, बिकॉज इमेजेस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और मैं जितना कह सकता हूँ डिस्क्राइब करूंगा, उससे अच्छा आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चूंकि वक्त कम है, मैं सिर्फ 2 क्लिप, एक बहुत ही फेमिलियर क्लिप है। आप सीधा इंटरनेट लगा दीजिए, छोड़ दीजिए जो पावर पॉइंट है। इंटरनेट लगाइए, यहाँ पे गूगल यूट्यूब लगाइए और सर्च कीजिए आज हिमालय की धरती से फिर हमने ललकारा है, ठीक है। उसको मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे आप में से लोगों ने आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा उसको, ठीक है। आज हिमालय की धरती से फिर हमने ललकारा है। गाना यार, आज हिमालय की धरती से, ठीक है। हाँ चला दीजिए, इसको छोटा ही चलाएंगे जो भी है। वॉल्यूम कम कर दीजिए। बेनेडिक्ट एंडरसन को याद रखिए जब आप देख रहे हैं इस फिल्म को, तो राष्ट्र कैसे बनता है, किन कल्पनाओं के सहारे बनता है, मैप्स, म्यूजियम, सेंसस आदि आदि है। 1943 1942 क्या था, क्विट इंडिया मूवमेंट, इसका अनुवाद है ये गाना। क्विट इंडिया नारे का अनुवाद है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। डाइवर्सिटी जहाँ हमारा ताजमहल है, मॉन्यूमेंट पे हमारा जलाल साहब ने काम किया है, मॉन्यूमेंट्स पे दिल्ली के। जहाँ और ये आइटम सॉन्ग था इस फिल्म का। गुरुद्वारा है। मैं बताऊं क्यों मैं इसको आइटम सॉन्ग कहता हूँ। धरती पर तुम्हारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान। आदि आदि, ठीक है। अब इसको रोक देते हैं। गाना तो हम लोग को अच्छा लगता है सुनना, हम सुनते जा सकते थे, लेकिन शेर साहब नाराज हो जाएंगे। तो क्या है कि दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा, क्विट इंडिया का बहुत ही खूबसूरत क्रिएटिव अनुवाद है ये, ठीक है।
और एक ऐसा अनुवाद है जो कि ब्रिटिश सेंसरशिप को भी इवेट कर जाता है ना, क्योंकि इसमें जर्मन और जापानी का नाम बाद में आता है, अंग्रेजों का नाम नहीं आता है, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट जो था वर्ल्ड वॉर का कॉन्टेक्स्ट था, है ना। वहां पे जर्मन जापानी दुश्मन थे अंग्रेजों के, उनको ललकारा गया है ऐसा लगता है। लेकिन जो फिल्म देखने के लिए इकट्ठा हुए रॉक्सी थिएटर में कोलकाता में हफ्ता दर हफ्ता जो लगातार देखने गए उस फिल्म को, ऐसा कि रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। वो फिल्म देखने नहीं जाते थे, जा रहे थे। फिल्म में अशोक कुमार एक पॉकेट मार हैं, उठाई गिर हैं, हार की चोरी करते हैं, ठीक है, और उनकी प्रेम कहानी है एक गायिका के साथ, एक्ट्रेस के साथ, ठीक है, जो थिएटर में काम, वो नहीं है। ये बीच में डाल दिया ये गाना, ठीक है, जो कि स्टेज पर गाना होता है, इसीलिए मैं इसको आइटम सॉन्ग कहता हूं। ऐसा गाना जो कि फिल्म की कथा में इंटीग्रेटेड नहीं हो, उसके लिए जरूरी तत्व नहीं हो, बल्कि अतिरिक्त आकर्षण के रूप में फिल्म में आए, उसको मैं आइटम सॉन्ग कहता हूं। आजकल वो सेक्सी सॉन्ग को सिर्फ आइटम सॉन्ग कहा जाता है, लेकिन उस जमाने में देशभक्ति गीत भी आइटम सॉन्ग होता। याद कीजिए, हमारे पास जो भी देशभक्ति गीत है, फिल्मी गीत हैं, कम से कम हमारी याद में, जाहिर है देशभक्ति गीत बाहर भी लिखे गए, उनको बैन भी किया गया, अंग्रेजों ने अंदर भी किया लोगों को। जब भी वो देशभक्ति गीत छापे गए या लेख छापे गए, गांधी जी के ही बहुत सारे लेख बैन किए गए, है ना, वो सब कुछ चल रहा था उस जमाने में। लेकिन चतुराई ये है कि मैंने कहा ना कि हर सिनेमा देखने वाला भी एक छोटा सत्याग्रही है, जिसने बता दिया फिल्म में जाकर के कि हमें ये गाना पसंद है और ये क्विट इंडिया में कह रहा हूं, तुम चाहे जो भी। क्यों, लगभग उसी तरह की बात है कि जब 1857 में चपाती घूम रही थी, किसी को पता नहीं था कि चपाती का मतलब क्या था, लेकिन उन लोगों को जो चपातियां घुमा रहे थे उनको पता था कि चपाती में से एक संदेश छुपा हुआ है, कोई तो है जिसका विरोध करना है, जिसकी मुखालफत करनी है, वगैरह वगैरह। अगर चल सकता है तो थोड़ा एक जन्मभूमि दिखा दीजिए। कई फिल्में 1930 के दशक में बनी दोस्तों, अछूत कन्या सब जानते हैं, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अछूत कन्या को हीरोइन बनाया गया, ठीक है, अनटचेबल महिला को हीरोइन बनाया गया, बड़ी बात है ना उस जमाने के लिए, जो कि काफी जमाना ब्राह्मणिकल था, आप कह सकते हैं। उच्च जातियों का ऐसा वर्चस्व था, जैसा कि मतलब जाहिर है वो धीरे धीरे कम होता गया है, वो डेमोक्रेटाइजेशन समाज का हुआ है, अंबेडकर वाद बढ़ा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि आपको हिंदी सिनेमा उतना अंबेडकरवादी न लगे, लेकिन गांधीवादी तो जरूर था। वो बच बच कर चल रहा था, उसको थोड़ा सा अपने बॉक्स ऑफिस को बचाना था, वो सब भी कर रहा था, लेकिन गांधी को तो पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। और जिस हद तक गांधीवाद वो पेश कर सकते थे चतुराई से, उतना वो करते गए। जन्मभूमि, नॉट दिस वन, बहुत पुरानी फिल्म है, 1930s की फिल्म है, मैंने उसमें रखा तो है, अगर आप फोल्डर से ले सके। 36 वाली है ना ये अशोक? 1930, हाँ ये वाला कलरफुल है, राइट, बहुत घटिया प्रिंट है, हिस्टोरियंस को बहुत घटिया डॉक्यूमेंट वही उपलब्ध है। इसको 20 मिनट, डॉक्टर गांव में जाकर काम करता है, उसके पिताजी बहुत खुश नहीं है उससे, और हीरोइन जो है, जो उस डॉक्टर से प्यार करती है, वो भी उस डॉक्टर के पीछे वहां जाना चाहती है, और उसके पिताजी इससे नाराज हैं, ठीक है। ये है गांव। वॉल्यूम ओ लीजिए। तो गाना कैसे हम सुन पाएंगे? मेरा वाला नहीं चल पाएगा ना? हाँ ये ठीक होगा। इसमें सरस्वती देवी का म्यूजिक है। सरस्वती देवी म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत कम हुई हैं महिला म्यूजिक डायरेक्टर्स भारत के फिल्मी इतिहास में। शी इज वन ऑफ देम, वन ऑफ द पायनियर्स, जिनके बारे में कहा जाता है
कि उन्होंने भी इन्वेंट किया प्लेबैक को। गांधी जी गांव पर बहुत जोर देते थे, तो हर इंसान, चाहे महिला आंचल, प्रति परिकथा, ये सब अगर आप देखें रेणु के उपन्यासों में या बाद की फिल्मों तक में, कि लोग, अच्छा जो इंसान होता है, नायक होता है, वो गांव में चला जाता है डिग्री लेकर के। प्रोफेसर भी स्कूल में पढ़ाने गांव में चला जाता है। फिल्म दीदी फॉर एग्जाम्पल देखिए, कई फिल्में ऐसी हुई। तो गांधी का प्रभाव इतना रहता है, एक सेकंड के लिए बस रोक दीजिए, कि गांधीगिरी का प्रभाव और उनकी अहिंसा का प्रभाव, जैसा कि मैंने एब्स्ट्रैक्ट में कहा है, कि अमिताभ बच्चन जैसे एक्शन हीरो को पैदा होने में 1970 का दशक का इंतजार करना पड़ा। उसके पहले हृदय परिवर्तन ही नॉर्म होता था, विलन का भी हृदय परिवर्तन हो जाता था, और विलन भी उसी परिवार के साथ, उसी गांव में या उसी शहर में सह अस्तित्व के साथ रह सकता था। हिंसा की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब हिंसा के बिना फिल्म होती ही नहीं। तो ये गांधी का ही असर था। गांधी की तस्वीर जब आप किसी कॉलेज, फिल्मी कॉलेज को देखते थे, या फिल्मी कोर्ट को देखते थे, या फिल्मी पुलिस चौकी को देखते थे, गांधी की तस्वीर हमेशा, कभी भी जब आप फिल्म देख रहे हैं, गांधी की तस्वीर के समय क्या डायलॉग बोला जा रहा है और क्या एक्शन हो रहा है उस फ्रेम में, उसको ध्यान से देखिएगा। कोई रिश्ता है, गांधी उस फ्रेम में अचानक कैसे आ जाते हैं, क्यों फिल्म मेकर उनको ला रहा है, क्या घट रहा है आसपास, कुछ न कुछ विरोधाभास पैदा करने के लिए, कुछ न कुछ रेफरेंस लेने के लिए। तो गांधी की मौजूदगी ऐसे ही सर्वव्यापी मौजूदगी रहती है काफी समय तक सिनेमा में, जैसा कि प्रकाश मखदूम ने अपनी किताब में भी दिखाया है और स्मिता जी आपको बता रही थी। लेकिन थोड़ा सा इसको देख लीजिए 2 मिनट से। प्रभात फेरियां होती थी। प्रभात फेरी नेशनलिस्ट मूवमेंट का बहुत बड़ा एक औजार था, एक सहभागिता का मंच था। सुबह सुबह उठ करके झाड़ू लेकर के, कुदाल लेकर के निकल गए सफाई करने के लिए, है ना। और वो रूटीन होता था, ऐसा नहीं कि स्वच्छता अभियान चलाया और भूल गए। उसमें होता था कि लोग उसको रूटीन लेवल पे चलाते रहते थे, लगातार चलाते रहते थे। तो लोगों को जोड़ने का एक तरीका था, है ना। ये हीरोइन एक और मतलब महिला है जो पागल है, ठीक है, उसको पूरा गांव पागल कहता है, लेकिन वो गांधीवादी प्रोजेक्ट में साथ है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मंटो को एंटिसिपेट कर रही है फिल्म, को देखा भी है। मंटो के पागल, टोबा टेक सिंह। एक टोबा टेक सिंह है जो सही कह रहा है और बाकी लोग गलत कह रहे हैं, सब उस तरह की बात है। अभी नक्शा लाकर दिखाती हमारी माँ। वो भवतोष जो कल तक सरकार के तलवे चाटता था, पूरा जो जो पावरफुल लोग हैं शेर होके सब, कहता है वो जो गांधीयन स्टार है उसके खिलाफ है। चाहे वो मैं वही जमींदार से अपनी लड़की का धार्मिक विवाह नहीं लोग हों, करूं। चाहे वो जमींदार लोग हों, चाहे वो साहूकार लोग हों, जो भी पावरफुल है, ताकतवर है, वो इनके खिलाफ साजिश, अजय डॉक्टर के खिलाफ साजिश करता है। सबको लगा हुआ है, इसलिए सबका नाक में दम कर रहा है। सब परेशान है, रैटल्ड है, ये कौन आ गया है, अपसेट कर रहा है, क्योंकि हम तो हुक्का भी दूसरी जाति का नहीं लगाते हैं अपने मुंह से, और ये आके जातियों के बीच समानता की बातें कर रहा है, ठीक है। इसमें सब जवानों के ग्रंथों की निंदा करता है, हमें मूर्ख कहता है, मलिन विद्या क्या सीख के आया है, तमाम दुनिया के इंजेक्शन लगाता फिरता है। कोरोना का पीरियड भी हमको याद है। इंजेक्शन? इंजेक्शन क्या? लोगों के शरीरों में जहर भरने का हुआ, उसी से अजय ने गांव वालों के सिर फिरा दिए और प्रेमानंद को मार डाला। ये तो अच्छा ही किया, प्रेमानंदी ने दरअसल ये झगड़ा शुरू किया था, लेकिन उसका साथ तो सिवा पगली के और किसी ने नहीं दिया। मगर इस अजय के पीछे तो सारा गांव पागल हो रहा है। आइए मनीलाल जी।
के साथ भी यही समस्या थी जो इन गांव के ताकतवर लोगों के साथ थी कि गांधी के पीछे लोग पागल पूरा समाज था उस समय और वो डील नहीं कर पा रहे थे। थोड़ा सा और आगे कर दीजिए। यहाँ पे एक गाना आना चाहिए 28 के बाद। वाह, वेरी गुड। जन्मभूमि क्या है? गांव है। शुरू में ही जैसे नेहरू अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहते हैं भारत माता कौन है, लगभग उसी तरह का डायलॉग इस फिल्म में आता है और उसके बाद इस गांव को इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑडियंस को। ठीक है, और ये खुलता है, फिर कहानी खुलती है कि गांधीगिरी का क्या मतलब है आज के भारत में, आज के गांव में, और उसको कैसे गांधीवादी लोग डील कर रहे हैं, उसको कैसे गांधीवाद को धरती पर उतार रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। Wish we could continue. It becomes so complementary between this film background, historical background, and your insights. I think there can be many questions, many issues. मुझे लग रहा है दो चार चीजें यहाँ क्लैरिफाई हो जाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए, एक तो इंटरेस्टिंग बात आपने कहा कि अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ गांधी। इस पॉइंट पर काफी बातचीत हो सकती है। Then secondly, I find the uses of symbols. मतलब गांधी का टोटल फिलॉसफी ट्रूथ के ऊपर क्या है, इस पर कितना चर्चा है, और छोटी छोटी सिंबल्स को लेकर कितना खेला गया। ये दोनों एक कॉन्ट्रास्ट है या कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एक दूसरे को? दिस कैन बी अ क्वेश्चन। एंड ऑल्सो you see, but what do you think about the simplistic presentations? It has to be simplistic, and the ideas, the philosophical undertones of Gandhi and his core of his struggle. Because we are also discussing about the truth element, Satyagraha, in today's context. वो कहाँ तक निभा रही है ये films? I think this can be broadly discussed, and if there is any question, please, I think both of them. It's an excellent presentation. Thank you so much. Please, it's open to. My question is a debate that film creates some impact on all art change in those films. And these filmmakers make films, and there is some sort of impact on audience as well. So today in contemporary world, where we can see the जिसको हम कह सकते हैं विस्तार of cinema and the impact, where masses are so much, and not only films but YouTube and Instagram and so many things. So do you think that today a filmmaker is making film to impacting audience that is related to Gandhi, or it is showing the reality of our contemporary world where Gandhi is somewhere losing its morals? Yeah. No, I know. I was waiting for it. Great presentation. Just quick clarification. You said something which is very interesting. That is, the idea of biopic was not picked up in that period. So just, it's an important provocative question. Why in the public culture of that time, the idea of biopic was not at all acceptable? That too of Gandhi. One, because it reminds me, I'm not a film historian, but because of Sanidhya, uh,
डॉक्टर किसकी अमर कहानी? अमर कहानी. So those films were also made. So just one thing, sir. एक छोटा सा सवाल है. बापू का तर्क क्या था सिनेमा को? I thought Ravi would mention it, but he went on. आप बता दीजिए. नहीं आपका एरिया है, आप बात कीजिए. Okay. So to just to answer your. Acha, sure. हाँ. Ravi, in fact, I remember Ravi as my former comrade from the university, but I didn't know when he got transferred to the Bavarian. He talks about unintended consequences. Maybe the CSDS. So, living with social distance. Gandhi, my father, he was in fact, in October, we had a conference of Gandhi ethics. And we invited Sundar Sarukai, philosopher. He has recently written a play. And it actually contrasts Gandhi with Einstein. Places Gandhi in the chamber and Einstein in the tower. It has arranged a dialogue between Gandhi's son Harilal and his daughter Gandhi. That was another dramatization of this troubled relationship, father and son, father and daughter. I mean, recently I have seen that this Harilal, after Gandhi, my father, both in plays as well as music, suddenly, otherwise we earlier saw only the critiques from outside. Now this internal dynamics, Gandhi's family, Harilal, things like that, creatively presented. Why suddenly that happened? So I would like to link the two sort of questions together. And why a biopic was not made. I mean, 1948 is such a crucial moment in that sense for our newly independent nation, and the entire nation goes into this kind of a phase of mourning, as it were. But when you look at the debates, and again, I'm going by what is available in the public domain, the film industry is very, very cautious at that point in time. क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई भी फिल्म वो बनाए उनकी लाइफ पर, तो वो कहाँ तक ट्रूथ टेलिंग एंटरप्राइज होगा, एंड इज इट necessary to also bring to the fore questions of his private life and his public persona and render it. बायोपिक का एक प्रॉब्लम ये है, और जो लोग ऑटोबायोग्राफी पे काम करते हैं जैसे हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में या बायोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में, हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वी डू नॉट लाइक टू ब्रिंग the private life into the public in that sense, and these are accepted arguments. And I have a feeling that in the immediate aftermath of the independence movement, our attaining independence and public figures being who they were at that point in time, specifically, I think Gandhi's assassination accreted the sense of iconicity around him, you know, and therefore it was probably not possible for us collectively to represent him, because there are a lot of issues that many filmmakers are discussing at that point in time कि हम कि कौन एक्टर प्ले करेगा बापू को, और क्या ये जरूरी है कि हम बापू को दिखाएं स्क्रीन पे. बापू हमारे सब तरफ हैं, हम दूसरी तरह से भी उनके बारे में बात कर सकते हैं, एंड इट इज नॉट एसेंशियल टू मेक अ फिल्म. एंड सो देयरफॉर व्हेन इन द 50s 51 से लेके जब से प्रपोजल्स आ रहे थे तब से ये डिस्कशन चल रहा है, और 62 में इनको रॉबसन को परमिशन दी जाती है जीओआई की तरफ से, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता था कि फिल्म में एक्चुअली हो क्या रहा है. और अब्बास जी वाज ट्रैकिंग न्यूज़पेपर्स इन लंदन
And that is how he gets to know कि actually 9 hours to Rama में क्या है, और तब इंडिया में आके वो बातें शुरू होती हैं और पार्लियामेंट में डिबेट्स हो रहे हैं. I have a feeling that what scholars and sociologists have suggested about the prevalence, about this idea of mourning, about desecration anxiety, about not tampering with his image was very important historically at that point in time. And to segue into what Satish ji is saying, perhaps we have come to a point where we can have now conversations about that past. It's not an immediate past for us. We have sort of seen generations after our independence. Many of the people have no memory of the partition now, or what it meant to be part of the independent struggle, about their relationship with these iconic figures. And hence, perhaps, given the way in which our lives are connected to online sources and whatever is available, it is perhaps easier for us to now step into those conversations and dialogues than it might have been possible for the earlier generation. उन्होंने जो सवाल पूछा about digital media और OTT, हमने इस फिल्म के बारे में सुना था, किसी ने रिसर्च किया 9 hours to Rama, तो हमें भी पता चला इसके बारे में. आज आप सर्च कीजिए, वो फिल्म अवेलेबल, वो एट दैट वो बैन हुई थी, उसका एक कॉन्टेक्स्ट था. लेकिन आज हम बहुत तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन वो कंटेंट किस कॉन्टेक्स्ट में कंज्यूम कर रहे हैं वो भी हमें सोचना चाहिए, टू थिंक अबाउट आवर ओन रिलेशनशिप टू एन आइकॉन एंड व्हाट ही मीन्स फॉर अस नाउ एंड व्हाट वी want to take away from those ideas. I think we're running short of time. So, Ravi. Sir, may I ask a question to Ravikant sir? Sure. Sir, my simple question is, given the present scenario of films in which many militant, nationalistic, masculine, nationalistic type of films are being made every day, how do you see this development in film industry? Is it for Gandhi or anti-Gandhi? And if it is anti-Gandhi, what are the reasons behind it? Thank you. Okay, can I? Yeah, very quickly. We have don't have much time, so let me start with Dr. Ghosh's question about unintended. It's not Weberian. I'm not a theorist. Ajay is a theorist, so I'm not. I do history, hardcore. I do a lot of empirical history, and I let my documents and films and clips and narratives, they speak for me. So unintended consequences, yes, in the sense that Hindustani, the language that Gandhi loved, is the language used by cinema, has been the language used by cinema. So there, it becomes a vehicle, right? Cinema becomes a vehicle for the spread and propagation of language that Gandhi loved, in spite of him not liking cinema. That's what I mean by unintended consequence. Similarly, this question about, so much maleness and prowess and muscle, and there are all kinds of films even now being made. There are also feminist films being made like never before. So I would not say that, there's just one kind of film. Yes, there is more action. There was a turn in the 70s in which Salim Javed created a particular kind of persona in Amitabh Bachchan, and there is more action there. So both kinds of films are still being made, I would say, Tandon Saab. As far as बापू का तर्क क्या था? बापू का तर्क देखिए, बापू, I mean, this is Gandhi did not like any communication that he was not in control of. It's as simple as that. For example, he was invited to come on radio by Lionel Fielden. Lionel Fielden, who was the controller of broadcasting in India in 1936, he was very pro-India, pro-Indian national movement. He was also gay. He came from BBC, and he asked both Jawaharlal and Gandhi and everybody to come and use my space. But Gandhi said, no, there is a stigma.
that your medium, this is an imperialist medium which carries. And this, I will be stigmatized if I come on radio. So I won't come. So he, of course, is publishing a whole lot of newspapers. We know that. He's using all kinds of media, but not the media which he cannot control. He's very careful about that. So पापू का तर्क ये था कि ये जो फिल्में हैं उसमें बहुत कमर्शलाइजेशन है, उसमें ऐसी तस्वीरें, राम राज्य इज द फिल्म ही सॉ, और वहां भी उनको बहुत अच्छी फिल्म नहीं लगी, पूरी फिल्म नहीं देखी, लेकिन हाँ देखी उन्होंने। उसमें भी फिल्मों के बारे में उनका कहना था कि इसमें एक तरह की नंगई है, जो कि उस जमाने में लोग कह रहे थे, बहुत सारे लोग कह रहे थे। इट्स अ वेस्टर्न commodification of women also, dress code, everything. So it is dangerous for, and you know, in a context in which Gandhi is fighting, it is an anti-imperialist war, and he doesn't want American Hollywood or foreign films to dominate, because those films are not pro-Indian films, right? In fact, even the foreign films were banned in India because they showed the Brits or whites in bad light sometimes. So even those films were banned because, you know, of particular kind of colonial censorship. In any case, Gandhi had not seen too many films, and I think he should not have commented on cinema. That's what Abbas said, you see. देखिए, Abbas gives a whole list of films. इन फिल्मों के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये खराब फिल्में हैं क्या? हैं? So, but he does not take up the challenge because he is not seriously engaged with this. Interesting question, sir. The answer can only be a speculative one. We have actually, but let's think about it. We have never gotten into the private lives of very famous people. Even heroes and heroines, we don't really gossip about. Till recently, we did not gossip about. Let me put it this way. We have started gossiping about them more than we did earlier. So this is a new trend, but the person and the enigma, and it's a good thing that you can get into a person's life and, you know, critically analyze that person's life in all dimensions, as it were. That's a good thing. That's what postmodernism is all about. And it is so it takes you right inside the bedroom and in the kitchen. So that's what is happening with Gandhi also. Why not? Thank you. Thank you so much. I think it's time. So, Yeah. any more question? We can take one question. I think it's already getting late. So, okay. I think we had fairly good idea about what the films and theaters are doing. Yeah, Yes. yeah, it's always. So any question where it tickles somewhere, it can be discussed while we are having tea. So let's move for tea and reassemble that. There is no final word, but I'm still wondering what Satyagraha means today. Your main thrust of the whole thing, that how do we interpret and implement and imbibe it today as politics? I think we are lost. Yesterday there was an interesting session on what was it? Film Satyagraha in we had. Uh-huh. No, not the last but one. Electoral. Yeah. Questions came up, but I think it was left absolutely open because we really do not know what to do. So I think this is at least gives some triggering points to think over it. I think that's good enough, I suppose. When we are discussing Satyagraha, farmers have already started. Yes. Yes. But Yeah. Yes. But Delhi is a castle.
Again, again that question came up. Buttons, Delhi is a castle. I live No, in no, even Karol Bagh is a castle. I probably, experienced it. but people who are on the border know about the marginalized spaces and हाँ ये सवाल भी आ जाता है, कल जैसे बात हुई थी भाई, जो प्रोटेस्ट मूवमेंट है एंड सत्याग्रह, इन दोनों में रिलेशन क्या है? दिस इज द इंटरेस्टिंग पॉइंटर्स जिसके ऊपर मेरे ख्याल में देयर इज अ नीड टू yes, yeah. So that is why you see, Lage Raho Munna Bhai also and Rang De Basanti both use the memory of Gandhi. That fascinating quote from Ashish Shah, Yeah. that there are memories about Gandhi, and those memories are constantly being reworked. So that it is memory is being highlighted by those films. Gandhi is not just available to us. We have to revoke those memories and remember through plays, and narrate. and satires. Yeah, thanks. So thank you so much. बंद कर रहा है बाबा कुछ? नहीं, लेट गया. Okay. बैठे थे बहुत देर I से. think the chair has said the final मैं word. सोच रहे थे तब तक याद आया कि 12 बजे तो ऑनलाइन करना है. ये करके तब लेटेंगे. मैं देख लिए वहां चल रहा होगा कहीं से पैसा निकाल लो इनको देने के लिए. किनको? अरे राज को. अच्छा. नहीं मेरे पास है ना पैसा, मैं दे दूंगा कैश. मैंने तुमको देखो. Just a moment, we have a. मैं आपसे नहीं तो किसी और से नहीं लेता हूँ ना. Yeah, please just hold on for a moment. Professor Anand. ये चैट किस नाम से था जिसमें लिंक था ये? गांधी. Yeah. क्या था? गांधी अंबेडकर लोहिया. नेक्स्ट सेशन में कनेक्ट कर लें. Are we taking any? Satish, are we taking any question? No. Okay. Thank you so much. I would request all the attendees and our esteemed guests to please proceed for tea. We'll take a 10-minute break and then we'll reassemble for the next session. Thank you. अभी क्या टाइम है? जी सर, प्रणाम. हेलो जी, 10 मिनट खाली सेशन तो लंबा चल गया. जी We are delayed by 15 minutes. So we'll be starting shortly after the tea break in about 10 minutes time. So we'll start at 12:30. ये कौन कर रहा है? ये सनी है. This is what Department of Political Science, right? Department of Political Science, because this is with their collaboration and Gandhi's right. So, yeah, do I need to sign? No, this is only Google. Yeah. For the next session. Anand Kumar. Online है वो. या तो बोलो फोन की करे बोली. ঠিক করে দাও, সবকটা আছে. শুধু ইমেলটা দিয়ে দাও. আচ্ছা দেখলো না হলে তো আবার হবে. এই
आनंद सर ऑनलाइन है ना, इसलिए बाहर रख दिया। रिपोर्ट टेकन करेंगे ना। यहाँ पर आनंद कुमार ऑनलाइन है। आनंद कुमार has joined online already. तो एक फोल्डर बचेगा ना हमारे पास। कहाँ है फोल्डर? 4 3 आ रहा है। आनंद आनंद ये भर रहा हूँ। ये क्या है, ये भर देना आप। हाँ, थीम लिखना पड़ेगा। अरे नहीं सर, आपको जो कन्वीनियंट है आजकल ये सब करना पड़ता है। मुझे नहीं कह रहा हूँ। ये टूटा था। ये ऑर्डर नहीं है अजय, हिलाओ और थोड़ा है, थोड़ा कोई नहीं। वो मिला आनंद कुमार It's a 4 or 3. 3. Good demo session. हिलाल सर का चला गया, आनंद सर का चला गया, अजय सर। ठीक है। अजय जी की स्लिप का है। अजय जी की स्लिप का है। अजय जी की स्लिप का है। सारे वो ऐसा तो होगा कि नहीं, अजय जी की बनी नहीं होगी। नहीं, इसको लेकर क्या करूँ? इसको लेकर क्या करूँ? पिछली बार आया, कल आई नहीं सकते। पिछली बार आया। प्रिंट तो करा के लाया था ना। यहाँ तो देखो यार, इसकी नहीं है, बाहर देखो, बाहर जिसने काटा होगा दे जाए। बाहर कुछ निकल जाना। मार्कर से लिख दो। और क्या मार्कर से लिख दो। अच्छा, अब इसके बाद बस एक और सेशन अजय जी। सुनो मत लिखा, बुरा लगेगा। ऐसा भी कर देते हैं आप। ऑफिस के ऊपर ऐसा वाला ये लेके जाओ और बोला ऐसा प्रिंट कर दीजिए। मैं उन्हें भेज दूंगा, लिख के भेज दूंगा ना ऑनलाइन, या वो करके दे देंगे। वो करके देंगे, फिल्म कर देंगे। मैं ये तो करी थी आपसे। अच्छा, कहाँ पे? प्रिंसिपल ऑफिस के ऊपर जो नेट रूम होगा, हाँ, नेक्स्ट रूम। ठीक है। उस नविता मैम ने भेजा है। और सुनो बच्चा, इधर आओ, ये वापस कर। ये अभी 6 दिया था उसने, 5 देंगे ऑनलाइन। हमने मैम हमने नहीं तोड़े हैं, वो पहले से टूट रहा था। तुमने तोड़े हैं? नहीं हमने नहीं तोड़े। ये अगले सेशन में यूज करने के लिए हमारा ये आनंद है नहीं। बाकी 3 ही जाएगा, भूमिका 3 ही जाएगा।
जो चौथा है उस पे ये सर्टिफिकेट्स रख लो। आनंद कुमार का नेम टैग तो लगा ही दो। इसमें लगा दो अगला सेशन का। गुरप्रीत मैम का लगा दो। उस फोल्डर में रख दो ना। सब आप पे। और हाँ अगले सेशन के लिए 2 और फोल्डर ले आओ। एक ओएनएम भगत सर एंड ओएनएम भगत सर आएंगे, गुरप्रीत मैम आएंगी, अनुराधा मैम आ चुकी है, सर ऑनलाइन है। अनुराधा मैम आ रही है, अनुराधा मैम आ रही है। मैम तो आगे बट उनका सर्टिफिकेट का है अनुराधा मैम बाहर होगा। ये इंसानी फोल्डर में रखा है। किसी का है नहीं चलो सर्टिफिकेट। ये अजय सर हेलो 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 हेलो। क्या करना है? बाद में ये लगेगा तो मैं तेरे करा के तेरे भरोसे छोड़ दूंगा ना ना हमारे नहीं बचेंगे मैम। Hey, Lal, तो क्या? How is your health? I didn't know you are not well. Suddenly, somebody told that you are seriously ill and all. अभी कैसा है? Perfect. It's all perfect. बस समोसा नहीं खाता। Cholesterol was है, cholesterol was the thing, huh? You didn't get checkups? Everything is fine, back to normal. Good. Almost back to normal. Oh, this. Where is Satish? Should we start? Yeah, we'll No, start. we'll wait at bank account. Satish, shall we start or wait?
Amount is less or ये लिखना too much of अरे यार, अब ये बैंक डिटेल बड़ा चक्कर है। Pan, I carry the card. Because we also need it I card ना. हाँ, I extend my warm greetings to everyone present here. Welcome to the fifth session of the National Seminar on Gandhian Satyagraha in 21st Century. I am Shrutika Seturaman, and I'll be the anchor for this session. Without further ado, let's move to the session that is on Satyagraha and new social movements. It is my honor to introduce our distinguished panel today. I request Vikas to facilitate Mr. Mithilesh Kumar Jha with the token of gratitude. I request Tanishka to facilitate Dr. Hilal Ahmed with the token of gratitude. I request Tanishka again to facilitate Professor Anand Kumar with the token of No, gratitude. I'm not Anand Kumar. You have to send it, post it to him. Please facilitate Dr. Ajay Gurdavan with the. Okay, thank you. No. I'll move forward by introducing the three distinguished speakers we have today for this session. Our first speaker for this session is Dr. Mithilesh Kumar Jha. Dr. Jha teaches political science at the Department of Humanities and Social Sciences, IIT Guwahati. His research interests are political thought, theory, and Indian politics. He's the author of Language Politics and Public Sphere in North India, Making of the Maithili Movement. Dr. Jha's articles and review articles have appeared in journals like EPW, Studies in Indian Politics, Contributions to Indian Sociology, Seminar, The Book Review, and LSE Review of Books. He has also contributed chapters in the edited volumes published by Sphere, Orient Black Swan, and Springer. Our next speaker of this session is Dr. Hilal Ahmed. Dr. Ahmed works on political Islam, Indian democracy, and politics of symbols in South Asia. He is the Associate Editor, South Asian Studies, Journal of the British Association of South Asian Studies. He did his PhD from the School of Oriental and African Studies, University of London, 2007. Dr. Ahmed's first book, Muslim Political Discourse in Post-Colonial India, Monuments, Memory, Contestation, explores the thematic concerns to evolve an interdisciplinary approach to study Muslim politics. Moreover, he has worked as a lecturer of political science at University of Delhi, a visiting professor at Kriya University, visiting fellow at Victoria University, to name a few. Dr. Ahmed has also conceptualized and developed an academic mobile app, Shark Delhi, an app on the partitioned city of Delhi. He was awarded the Institute of Advanced Studies Nantes Fellowship 2018-19, the Rajya Sabha Fellowship 2015-16, the Asia Fellow Award 2008-2010, and much more. Moreover, a film, Beacons of Hope, English 2008, documents Dr. Ahmed's life story. No, that's the content. Idea. All right. Professor Anand Kumar has joined us virtually. Professor Anand is a retired professor of sociology at Jawaharlal Nehru University. Adding on, he's an ex-member of the Aam Aadmi Party as he contested for Lok Sabha from the Northeast Delhi parliamentary constituency in the Indian general election. Professor Kumar did his PhD in sociology from the University of Chicago in 1986. He was a sociology lecturer at BHU from 1979 to 1989, an associate professor of sociology at JNU from 1990 to 1998. As far as his teaching experience goes, Professor Kumar taught as India Chair in Germany, GSP scholar at Humboldt University. He was Fulbright visiting scholar at Tufts University from January to May 2013. Furthermore, he was an international faculty at Innsbruck University, Austria, GSP faculty at Flaxco, Buenos Aires, Argentina.
Lastly, we have Dr. Ajay Gudavarti with us, serving as the chairperson for this session. Dr. Ajay is an associate professor at the Center for Political Studies, JNU, and his areas of interest include political theory, contemporary political movements, civil society and democracy, post-colonial theory, and populism. Prior to teaching at JNU, he also taught at the National Law School, Bangalore, from 2003 to 2006. Moreover, he was a visiting fellow at the Center of Modern South Asian Studies, Tübingen University, Germany, in 2015. Some of his most recent books include India After Modi, Populism and the Right, and Secular Sectarianism, Limits of Subaltern Politics. He's currently working on Democracy and Revolutionary Violence, which will be published by SAGE. Dr. Ajay writes regularly for various news dailies, including the infamous The Hindu, Telegraph, The Wire, and NewsClick. Now I'll hand over the floor to Dr. Ajay to proceed with the session. Thank you. Okay. So welcome to this pre-lunch session. Always in seminar, pre-lunch and post-lunch are the most difficult sessions. One, you are hungry, then you are sleepy. So I invite you for this pre-lunch session. We have three very eminent speakers. So I think without wasting, because we're always running behind time, shall I request Professor Anand Kumar, would you want to go first? Okay, Ajay, you are the chair. We follow your discipline. So it's an absolute pleasure to invite Professor Anand Kumar to share his thoughts on the subject. Sir, about 15 minutes. That should be okay. That will give some time for question answers later. Yes, sir, that's the thing. So it's over to you then. So around 12 minutes, you can give me a signal so that I can wrap it up. I'll do that. I'm sure I'll do that. Thank you. Scholars and friends, it's a great pleasure for me to join you in this very distinguished panel where there are some concerned and engaged intellectuals to share with you their understanding of the Gandhian methods and Gandhian approach and the new social movements. When we talk about new social movements, generally there is a difference between historians and sociologists and political scientists about what is the date of this beginning of the new social movements. Some of us will like to link it with the 60s, when throughout the world, particularly in the Western Europe and America, there was student revolt, there was civil rights movements, and there was some kind of a non-party, ideologically open-ended and socially very complex combination of people walking the streets, shouting slogans in favor of change. And this change then later on manifested itself in a variety of movements, particularly the gender justice movement, civil rights movements, environmental movement, human rights movements, anti-war movements. At least these are 5 branches or 5 categories of movements which are now the subject matter of new social movements. The difference between new social movements and the old social movements was around the presence and absence of a political structure or a party, a class organization, an ideological program. So when we look at the present scenario in 21st century, there are many claims where it is suggested that the new social movements have borrowed very heavily from the Gandhian techniques, and a few of them have also aligned with Gandhian ideology. Well, what is Gandhian ideology is a problem for Gandhi himself, because he was an ever-evolving, ever-renewing thinker who combined, in Gramscian terms, an ideal type of praxeology. He moved into a field with a set of ideas, and he came out of the field after being thoroughly renewed by the experience of the field. And then there was a new conceptualization, new formulation, which made him move from God is truth, or you can say move from truth is God and God is truth kind of debate, supporting Varna model and then going for only intercaste marriages, where one of the two must be a Dalit. Not believing in
any appropriation by the state of the rich and their property, and then going for no compensation for the Rajas, Maharajas, and Jamindars in the 40s. So I will suggest to you that there is need to look at new social movements around three of the central principles of Gandhian approach. I must say Gandhian way, not Gandhian ideology as such, but Gandhian way. And what are the three things which are very connecting elements for new social movements in the Gandhian way? First of them is truth or facts. As Gandhi did it in Champaran, new social movements are anchored in a body of facts which are shared between the state, the dominant communities, and the oppressed people. For example, the fact of war, fact of environmental pollution, fact of violence against Dalits or women or the minorities. So, first basis of connect is truth. Second is non-violence. You look at all the movements around the world, and you'll find that there is a general tendency to move away from use of force, use of weapons. There was a wave of terrorism in the 70s and the 80s, even in America, Germany, France, and England. But later, they reconciled with the realities of the time, and they made commitment to follow peaceful methods or non-violent methods at best. Here, civil disobedience is a connecting thread between the new social movements and the Gandhian way. And finally, Satyagraha, insisting on certain definition of the situation, insisting on certain resolution of the conflicts, and insisting on solutions which are to be then and there. And this Satyagraha-centric approach is to be seen in gender justice movements. Somebody was mentioning in the pre-session about Nirbhaya and how the whole mobilization against sexual violence or violence against women was focused through civil disobedience. And they went up to the parliament, they went up to the president's palace, and they said, we don't want to have any other solution except punishment to the guilty and long-term perspective, long-term policies to meet the challenge of violence against women. Similarly, you have some other cases like environmental movements, particularly the Narmada Bachao, and some of the successful movements like Baliyapal or many others in India and around. Now I want to come to the other part of my story. I, as somebody who believes in the efficacy of Gandhian way, finds it quite perplexing that in recent times, particularly in last 15 to 20 years, when we arrange for a paradigm shift and we move from state-centric policies to corporatization of our political economy, that the efficacy of Gandhian way, the efficacy of peaceful movements, the efficacy of non-violent protests is going down. We have a perplexing situation where the state is democratic, but its orientation towards peaceful movements, democratic mobilization, is very anti-democratic. What do we do here? It is said that within the Gandhians themselves, there is a serious disappointment. They have many examples at hand to argue that peaceful methods are not being respected, not being honored. And they also go to the civil liberties movements, organizations which are protecting fundamental rights, democratic rights, to argue in their favor. So there are people's commissions. First, there is a protest. Then this protest is ignored. Then there are citizens' initiatives for interventions, and we have citizens' reports. Then those reports are able to attract some more support, but then more support is more indifference. So for this panel of this afternoon, I would like to suggest to explore three questions for furthering our understanding of new social movements and the Gandhian way. First of all, why democratically elected regimes have shown absolute disrespect towards peaceful or democratic methods. Why?
What is the basis? My argument will be to look into the details of new legitimacy, which is coming not through people's vote, but through sanctions and support and funding of the corporates. If corporates like a regime, then they can survive even after ignoring people's protests. Second question is, why Gandhians themselves are taking a back seat in these times of turbulence and protest? Why there is lack of confidence, lack of orientation? Why we don't have continuity of the tradition of Vinoba, Jayaprakash, and some others? What has happened to them? Why that factory of Gandhians has been closed and there is no more connect between the younger generation of protesters and the Gandhian institutions, Gandhian organizations, and Gandhian mobilizations? And third and the final question is, are we condemned to live with cult of violence in the name of democracy and in the name of democratic regimes? Thank you very much. Thank you, Professor Anand Kumar. You have completed much before time. So, Mathilesh, over to you. Thank you. It's an honor and privilege to be on this panel to share some of my thoughts on Gandhian ideal of Swaraj, and particularly to assess its relevance for the contemporary challenges that we face in our politics, in our society, and also at the personal or collective level in our personal intimate life as well. So I look at in this paper first to the concept, its socio-political context, intellectual context in Gandhian time, and how this idea of Swaraj fits within the larger lexicon of Gandhian politics, which is not just about state or democracy, but has a kind of continuum from self to community to nation and also beyond the globe as a humanity. So in the first part of my paper, I basically look at these conceptual, intellectual context of this idea within the Gandhian lexicon. In the second part, I'll be looking at how this idea inspired many movements like Lohia, Jayaprakash, and even in recent times, starting with India against corruption, how this idea remains relevant or inspiring for the people or groups involved in large-scale socio-political change and discourse in the country. I'll conclude my presentation with two quotations, and that is how I have structured my my paper. I have not really, I'm not going to read out whatever I have written, but within the given times, I'll try to capture some of these themes which I have just outlined. Swaraj was an article of faith for the millions of Indians during the anti-imperial nationalist struggle. And this term continues to inspire many in their struggles for freedom and autonomy. It remains the most cherished ideal in the political discourse in the country, and it is central in the central concept in the Gandhian lexicons of politics. It has deeply influenced the socio-cultural, political, economic, as well as the intellectual life of the nation, starting from the political independence to large-scale socio-economic initiatives by the government and demands for further democratization or decentralization of power, which lead to 73rd, 74th Amendment can be seen in this regard. So Gandhi, through the concept of Swaraj, intrinsically weaved the independence and autonomy of individual, community, and state together. It was simultaneously applicable to individual, community, and state. This idea to this audience, I need not to say, was articulated in Hindu Swaraj.
he practiced. So Gandhi is not just in the realm of ideas or utopia, but he practiced it throughout his life, and this text he came to again and again all his life. Um, so this term has acquired a prominent place in the imagination of modern India, inspired many leaders, groups, and organizations who often come from the opposite spectrum of political ideology. This term has been invoked in post-independent India during its numerous critical moments, such as socialist movements, particularly of Lohiyite brand, and in early decades after the independence, his ideas on Saptakranti, JP and students movement, the ideas of Sampurn Kranti, and in recent years, India against corruption, some new initiatives like Swaraj Abhiyan or Jan Suraj. These are the reflections of the continuity and continued relevance of this idea. So this paper examines this idea of Swaraj in its historical, conceptual, and intellectual context. It does so by situating it in the broader socio-political and intellectual context of early 20th century India, examining the concept of Swaraj by comparing it with other equally significant concepts in Gandhian lexicon of politics like truth and non-violence, Sarvodaya, Antyodaya, Swadeshi, and Satyagraha. It also compared this term with its non-Gandhian interpretation, and in doing so, this paper seeks to examine how the ideals of Swaraj, as interpreted by Gandhi, turned out to be a rallying point for the millions of Indians. So even today in contemporary India, there are men, women, driven by Gandhian ideals, do their activities, but may not be considered by many of us large enough to alter or to challenge the power that we. The one of the question is that how these men and women in their mundane day-to-day activities relate to or think about this concept of Swaraj. This idea also influenced many intellectual activities, most notably articulated by K.C. Bhattacharya, Swaraj in Idea, and this is being highlighted, referred to again and again by those who are seen by many as opposed to Gandhian ideals. I'll skip the second part about the context or intellectual context, but very briefly, Gandhi was, when developing this idea, very critical of both the moderate and the extremist, and thought that, Swaraj is a reference point for the many, but the method that was being followed was something which may not lead to the desired outcome which we have thought. So he criticized the moderates and the extremists. He was also critical to India's home rule. There are Hindu Mahasabha or leaders like Madan Mohan Malviya who are also theorizing the concept of Swaraj, tracing it to Vedas and ancient Indian literature. So Swaraj is for them possible only through the revival of Sanatan Dharma or Hinduism. Although himself a proclaimed Sanatani and devout Hindu, Gandhi, however, provided a more radical, updated, and much more syncretic interpretation of Swaraj. So Swaraj that Gandhi was fighting for was a modern dharma for India to lead a moral and ethical life. And he provided an alternative to not just the ongoing debates on Swaraj, but also a critique to the modern Western civilization based on greed and exploitation, competitiveness, which divide the human from its nature. Among all the works, Hind Swaraj is very fundamental to understand Gandhi's thought, particularly on Swaraj, and some of the themes that this paper presents. So Danish Dalton calls Hind Swaraj a proclamation of ideological independence. I'm skipping some of these part. Farrell goes on to
explain about that. But so for Gandhi, Swaraj has basic two connotation, that is Swaraj as a self-rule for the individual, capacity to control and regulate his life or mastery, and Swaraj as self-government, and both are interlinked. Besides defining Swaraj at the individual and collective level, Gandhi explained its connection with other concepts such as Swadeshi, Sarvodaya, Antyodaya, and so on, which I have just said. And in the previous talk, somebody was telling about how Gandhi expanded and created many mini Gandhi through various programs. So he went on to explain that in spinning wheel lies Swaraj, in prohibition lies Swaraj, in Swadeshi lies Swaraj. Thus, he establishes the multifaceted meaning of Swaraj. It was used not just for fighting against the British, it was equally used for fighting various social evils and practices to rid the toiling masses off from the multiple conditions of unfreedom such as poverty, untouchability, illiteracy, and exploitation. So it was a weapon to fight evils and injustices in their varied forms and manifestations. Thus, according to Gandhi, Swaraj was like a banyan tree, having innumerable trunks, each of which is as important to tree as the original trunk. And then he goes on to explain, the four pillars of Swaraj and its connection with the larger ideological debates of that time between capitalism and communism. And Gandhi found both the ideological positioning dehumanizing and not conducive for an ethical, moral livings for individual and community. Similarly, on his constructive programs, so two small booklets he wrote, constructive programs, its meaning and place, where he highlighted 18 points program, and Declaration of Independence, that's the Purna Swaraj. He connected this idea in various socio-economic programs, and largely to the Suraj and Ram Rajya. I'm sure some of you or many of you will be familiar with those 18 points program. So Swaraj basically at political level for Gandhi was against a mechanical or all powerful state which dominates society, and the idea of ever expanding organic circle establishes a Gandhian method of connecting Swaraj with the connecting the individual with the community and community with the nation and globe. So philosophy of oceanic circle, I'll skip 2 minutes. So the last part, if you look at the critical evaluation of Gandhian idea of Swaraj, so it is a innovative way to connect the self, community, and state in a continuum, and it provides a plausible alternative to the intoxication of modern civilization, which is based on greed, violence, and exploitation. And the way through which the Gandhian ideal of Swaraj was understood and interpreted by the vast majority of masses and peasants in India during the national struggle were not always in accordance with his likings, and Gandhi was familiar about that. Sahid Amin has extensively worked on this particular aspect of how peasants, millions of masses connected to Gandhi. I think I have to skip the Lohia and JP, the further development. Let me just come to the last part, which I thought is really significant. So much of our discussion is okay. Gandhian idea is convincing, but how we can practice it in our life. And this dichotomy, this contradiction was there even among the Gandhian followers. So Nehru-Gandhi debate, Nehru-Patel debate, if you go into, that is there.
So Fisher wrote a book, Mahatma Gandhi, His Life and Times, and I just quote, they, that means the people, paid him homage. Him here is Gandhi. They, the people, paid him homage and rejected his teachings. They held his person holy and discredited his personality. They glorified the self and trampled the essence. They believed in him, but not in his principles. So, I mean, I have not elaborated on the way Gandhian ideal of Swaraj inspired the movement like socialist movement in 50s and 60s, even in 70s by Lohia and Jay Prakash. Similarly, today, I think Prashant Kishore traveling in a very economically backward states, uh, certainly for a very different purpose, which may not be in accordance with Gandhian vision, but driven by the Gandhian ideal of reconstructing, reimagining the state and polity and participation of each in that. So with that, I'll just end and quote. So many of us carry in our heads to bring about large-scale social and political changes. In Gandhi's time, one of his followers went to him and asked him, um, what one individual can do to emancipate India. This is one of the followers asking Gandhi. To which Gandhi replied, please do not carry unnecessarily on your head the burden of emancipating India. Emancipate your own self. Even that burden is very great. Apply everything to yourself. Nobility of soul consists in realizing that you are yourself India. In your emancipation is the emancipation of India. All else is make-believe. So I'll just end with that by rephrasing this continuum in Gandhi, self, community, and nation. All the time when we talk about community, nation, change, which is visible, great, or grand, but Gandhi was trying to connect us to our own self and its Swaraj. I end it there. Thank you. Mithilesh, for this detailed packed presentation. So 12 minutes, 12:15 is the general. Yeah, no, that's all. Mithilesh, that's yours. Thank you very much for Mic is not I prepared a text for this seminar and particularly for this session, but the last session was so provocative that I have decided to give that up. Especially two questions, one by Professor Ashish Ghosh when he asked, what is the relevance of Gandhi for us? And second, the great presentation by my colleague and friend, Dr. Ravikant on Gandhi Giri. So I decided not to present to you. Satish sir, I'll definitely give it to you for publication if it happens. So I'm not going to do that presentation. Rather, क्योंकि यहाँ सुविधा है हिंदी में बोलने की, तो I prefer to speak in Hindi. Basically जो मुझे लगता है जो सवाल था सर आपका वो यही था कि गांधी को हम आज के रूप में कैसे बस मुझे अपनी आवाज के अलावा भी कोई आवाज आ रही है? नहीं कोई बात नहीं, तो मशीन का मामला हो जाता है ऑनलाइन पर। या तो इस सवाल को जानने से पहले, क्योंकि मैंने जो टाइटल दिया था वो यही था कि क्या सत्याग्रह का कोई एक सैद्धांतिक स्वरूप हमारे सामने हो सकता है हमारे समकालीन सवालों से रूबरू होने के लिए। तो मुझे पिछले जो सत्र था उसमें एक चीज याद आई गांधी गिरी को लेकर। मुन्ना भाई वाली फिल्म आप सभी ने देखी है, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ, और उसमें सबसे दिलचस्प सीन जो मुझे लगा वो वही था कि एक गार्ड ने
मुन्ना भाई को घूंसा मार दिया और उसने कहा कि नहीं, हमें जवाब नहीं देना है, आप इधर भी मारो। उसने दूसरे पर भी मार दिया और उसने कहा अगर दोनों पे मार रहा है तो उसका जवाब गांधी जी ने नहीं दिया। ये मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट है ना। वो सीन याद है ना? अभी यहाँ यूट्यूब खोलना पड़ेगा, समय नहीं है, भूख भी लग रही है। तो वो सीन मुझे बहुत दिलचस्प लगा, इसलिए कि राजकुमार हिरानी नहीं समझ पाए इस बात को कि जो समकालीन करने का सवाल है गांधी को हमारे लिए आज, वो उतना सीधा नहीं है जितना कि उस सीन में दिखाया गया है। गांधी कोई बूढ़ा मजलूम मजबूर आदमी नहीं है, वो बहुत बहादुर आदमी है। और वो एंग्री भी नहीं है लेकिन ओल्ड यंग मैन है। तो इसलिए थोड़ा सा, जो रवि भाई ने पिछली बार जो बात बोली कि 70 के दशक तक आते आते अमिताभ बच्चन का जो फिनोमिनन था वो पैदा हुआ, लेकिन वो उससे ज्यादा बहादुर व्यक्ति है। और उस बहादुर व्यक्ति को जब हम समकालीन बनाते हैं तो उसकी पूजा नहीं करते। तो मुझे लगता है कि गांधी भक्ति को अगर हम थोड़ा सा दरकिनार कर दें तो शायद एक संभावना खुलेगी हमें सत्याग्रह के नए सिद्धांत को समझने की। तो मुझे चार चीजें ऐसी लगी जो मेरे हिसाब से थोड़ी प्रासंगिक हो सकती हैं आज के संदर्भ में सत्याग्रह के सिद्धांत को समझने के लिए। या सत्याग्रह का सिद्धांत गांधी का सत्याग्रह का सिद्धांत होगा। उस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। मिथिलेश का पेपर मुझे बहुत पसंद आया है क्योंकि एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक व्यवस्थाबद्ध तरीके से उन्होंने एक बात हमारे सामने रखने की कोशिश की। गांधी की ऐतिहासिकता को अगर हम हटा दें, उनको जानने की कोशिश करें, और क्योंकि ये मेरा अपना विषय है राजनीति शास्त्र, तो ये हमसे उम्मीद की जाती है कि हम इतिहास को समझेंगे तो जरूर, लेकिन जवाब कुछ ऐसे होंगे जो हमारी समकालीनता को प्रासंगिक भी बनाएंगे, उनका जवाब भी देंगे। अगर ये है तो मुझे ऐसे चार सवाल लगते हैं जो कि गांधी से पूछे जाने चाहिए। पहला सवाल, ऐसे मुद्दों की तलाश जो आज के हमारे मूल प्रश्न के रूप में उभर रहे हों। हम ये मानकर चलते हैं कि हम अपने वर्तमान को जानते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा हमारा एक पेचीदा सवाल है, क्योंकि सामान्य तौर पर हम अपने वर्तमान को नहीं जानते और ना जानना चाहते। जिसे हम समकालीन कहते हैं, जिसे हम आज कहते हैं, हम उसको नहीं जानते। और मुझे ऐसा लगता है कि उसको जानने की हमें कवायद करनी चाहिए, क्योंकि गांधी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो अपने आज को जानते हैं। गांधी का इतिहास के साथ में जो संबंध है वो शायद उतना हमें नहीं दिखता, क्योंकि गांधी के लिए उनका आज ज्यादा जरूरी है। तो हमारे लिए हमारा आज क्या है, मुझे लगता है कि हम उसके बारे में नहीं जानते, ना जानना चाहते। एक दूसरी बात, अपने आज के इन सवालों की रोशनी में ऐसे ही मिलते जुलते संदर्भ तलाशना जिनका सामना गांधी ने किया। तो अगर गांधी को हम प्रासंगिक बनाएंगे तो पहली कोशिश तो ये होगी अपने आज को जाने, और दूसरा उन मिलते जुलते सवालों को जाने जिनको गांधी ने हल करने की कोशिश की थी। गांधी के अपने सवाल होंगे, जाहिर सी बात है, गांधी का युग और हमारा युग बहुत अंतर है, लेकिन उन सवालों को जानना जो गांधी और हमारे बीच में एक से हैं। इसलिए भक्ति किसी चीज का जवाब नहीं होती है, याद रखिए। गांधी के सवालों को जानना और उनकी तुलना हमारे अपने सवालों से करना, मुझे लगता है ये दूसरा अहम मुद्दा है जिस पर हमें सोचना चाहिए। तीसरी बात, गांधी के द्वारा अपने प्रश्नों को हल करने की पद्धति का निरूपण। उन सवालों का जवाब गांधी ने कैसे दिया, ये भी हमें पता होना चाहिए। तभी हम अपने आज के सवालों पर उस पद्धति को निकालेंगे। ये नहीं कहेंगे कि बापू ने, जैसे वो जो मुन्ना भाई वाला सीन है, बापू ने कहा इधर भी मार दो इधर भी मार दो, उसके पीछे एक मेथड है। वो मेथड क्या है वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम उन सवालों के जवाब दे पाएंगे जो सवाल आज हमें परेशान कर रहे हैं। और आखिरी बात, जो चौथा सवाल मुझे लगता है या चौथा मुद्दा मुझे लगता है, वो है गांधी की इन विविध पद्धतियों के सृजनात्मक अध्ययन के जरिए अपने जवाबों का निर्माण। Yani, we should have some kind of a creative engagement with Gandhi and then extract the method by which we can find our own ways to solve our questions. That is something which is it's absolutely needed. अब अगर ऐसी बात है तो पहले तीन चीजें तो बहुत आसान है, लगती आसान है, लेकिन आमतौर पर मतलब हम ऐसा मानकर चलते हैं कि हम आज के सवाल, अगर मैं हम आज पूछूं कि हमारा आज का सबसे मूल सवाल क्या है, तो इस पे हमारे मतभेद हो सकते हैं। औपनिवेशिक काल में ये सवाल बहुत सिंपल था, बहुत साधारण सा सवाल था, और अगर हम थोड़ा इतिहास जानने की कोशिश करें
यानी 1920 से लेकर जो 30 साल जिसको हम गांधी युग कहते हैं, उसमें ये सवाल बहुत स्पष्ट हो गया कि हम किसी विदेशी सत्ता के अधीन हैं, इससे हमें मुक्ति चाहिए। तो सवाल, मूल सवाल यही था। इसके आसपास बहुत से और सवाल थे। हमारे साथ में पेचीदगी ये है कि हमारा मूल सवाल हमें पता नहीं है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सोचने की जरूरत है। जो दूसरी बात है वो ये कि ये भी आसान है कि गांधी के संदर्भों को हम देखें और उसके बाद में देखें कि वो सवाल, उनके सवाल और हमारे, अगर ये हम करें तो मुझे जो लगता है, एक चीज लगती है कि गांधी और हमारे बीच में एक चीज जो है उससे हम थोड़ा अपना सवाल भी जान सकते हैं और गांधी का सवाल भी जान सकते हैं, वो है लोकतंत्र। लोकतंत्र एक ऐसी चीज है, डेमोक्रेसी, जिस पर गांधी कंसर्न है काफी, और गांधी का काफी, जिसे इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, वो गांधी का है। तो लोकतंत्र गांधी का और लोकतंत्र हमारा, उसके बीच में क्या समानता है और क्या असमानता है, तो कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। और अंत में बात सत्याग्रह का, क्योंकि मैंने ये पेपर लिखा था अंग्रेजी में, तो मैं उसका कुछ हिस्सा अंत में पढ़ूंगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि लोकतंत्र और गांधी एक चीज में फर्क करते हैं, लोकतंत्र और लोकतंत्र की भावना, ये दोनों चीजों में फर्क करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए वोट, याद रखिए कि वोट डालना उस जमाने में शुरू हो चुका था, हालांकि वोटिंग का अधिकार सब लोगों को नहीं था, लेकिन वोट डालना शुरू हो चुका था, इलेक्शन होते थे कॉलोनियल इंडिया में। और उस समय में जो 37 का इलेक्शन है, उसमें गांधी जी प्रचार करने भी गए थे। वो बहुत दिलचस्प प्रचार था और उसको मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जो गांधी ने जो एक सभा में 37 में जो उन्होंने एक भाषण दिया था, और ये भाषण अगर आज कोई दे अपने कैंडिडेट के लिए, तो वो हार जाएगा। मतलब गांधी कैंपेन करने गए हैं और वो ये कह रहे हैं, मैं पढ़ना चाहूंगा यहाँ से। इसके बाद ये गांधी कह रहे हैं, प्रचार हो रहा है याद रखिए, और अब आप अपने उम्मीदवार को लेकर गए हैं, कह रहे हैं कि इसको वोट दे देना। कैसे कह रहे हैं? इसके बाद मंत्रियों के अपने निजी आचरण का सवाल आता है। मंत्री मतलब जो इलेक्टेड हो जाएगा। दो तरह के लोग थे, जो वाइसराय काउंसिल, जो 1919 के बाद का जो डायरची है, उसके बाद नया संविधान जिसको नया कानून भी कहा जाता है 35 का आ चुका है, और उसमें इलेक्शन होने हैं, और इलेक्शन के बाद में मंत्री कहा जाता था। इसके बाद मंत्रियों के अपने निजी आचरण का सवाल है। कांग्रेसी मंत्री किस तरह अपना फर्ज अदा करेंगे? कांग्रेस के अध्यक्ष तो तीसरे दर्जे में सफर करते हैं, तब क्या वो प्रथम श्रेणी में सफर करेंगे? अब आप, ये मुझे, मेरा कैंडिडेट है और मुझे इसको कैंपेन करना है, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये, जो आप इसको वोट दे देंगे, तो क्या ये फर्स्ट क्लास में सफर करना शुरू कर देगा? इसी तरह गत 17 वर्षों से कांग्रेसी लोगों ने कड़ाई के साथ सादगी का पालन किया है, अतः राष्ट्र अपने मंत्रियों से यही आशा करेगा कि अपने प्रांतों के शासन में वे उसी सादगी का प्रवेश कराएं। इसके लिए वे लज्जित नहीं होंगे, बल्कि गर्व का अनुभव करेंगे। भूमंडल पर हमारा ही राष्ट्र सबसे गरीब है, वह इतना गरीब है कि हमारे लाखों देशवासी अध भूखे रहते हैं। इसके प्रतिनिधि ऐसे ढंग और तौर तरीके से रहने का साहस नहीं कर सकते जो उनके निर्वाचकों के रहन सहन और तौर तरीकों से मेल नहीं खाता हो। गांधी कैंपेन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ये अच्छे कपड़े पहनेगा, अगर ये इस तरह की हरकतें करेगा, तो आप समझ लीजिए कि हमें इसे वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आखिरी बात जो वो करते हैं, वो ये करते हैं कि आपने अगर, फिर वो कहते हैं कि जो आप लोग हैं, ये बहुत लंबा भाषण है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। जो आप वोटर हैं, अगर आप 4 साल सो गए, 5 साल सो गए, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है। तो ये रिकॉल का अधिकार नहीं है, सबको वोट डालने का अधिकार नहीं है, लेकिन वोटर का भी अपना एक अधिकार है, और वो ये है कि वो अपनी नैतिकता का पालन करे, और साथ साथ वो ये नजर भी रखे कि उसका जनप्रतिनिधि जो चुन कर आया है, वो कैसी हरकतें कर रहा है। ये चीज है लोकतंत्र की भावना, और मुझे ऐसा लगता है कि गांधी इस लोकतंत्र की भावना के प्रति सजग हैं। ठीक है, तो क्या ये लोकतंत्र की भावना हमारी लोकतंत्र की भावना से मेल खाती है या नहीं खाती है? ये सोचने का सवाल है। सब कुछ चंगा नहीं है। हाउ मच टाइम? 5 मिनट्स, ठीक। एक और, अब अगर हम
जिन 4 मुद्दों पर मैंने बात की थी और उनको अंत में जाकर देखें और लोकतंत्र की भावना और लोकतंत्र के फर्क को समझें, तो मुझे ऐसा लगता है कि 4 स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं, जो कि जो सवाल से मैंने शुरुआत की थी उस पर। लेकिन क्योंकि जो मैंने यहाँ पर जो टॉपिक दिया था वो सत्याग्रह से संबंधित है, तो सत्याग्रह पर 2 बातें करके फिर मैं ये जो अपना जो निष्कर्ष जो मुझे लगता है कि मैंने निकालने की कोशिश की है वो आपके सामने रखूंगा। सत्याग्रह और पैसिव रेवोल्यूशन में, पैसिव रेजिस्टेंस में गांधी अंतर करते हैं, और ये मिथिलेश ने इशारा किया अपने पेपर में, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन सत्याग्रह की 3 चीजों को मुझे लगता है कि एक, अगर हम गांधी के जरिए से सत्याग्रह को निकालने की कोशिश करें और उसे अपना समकालीन बनाने की कोशिश करें, तो 3 चीजें याद रखनी पड़ेंगी। ये कोट्स हैं मेरे पास, लिखा हुआ पेपर है, अगर आपको चाहिए तो मैं उसको आपके साथ में साझा करूंगा। पहली चीज तो गांधी कहते हैं कि सत्याग्रह सबसे अंतिम समय में इस्तेमाल करने वाली चीज है, सबसे पहले नहीं करना है। सत्याग्रह इज इन द लास्ट इंस्टेंस, और ये गांधी का एक कोट है, अंग्रेजी में है, मैं पढ़ूंगा। सत्याग्रह इज नेवर अडॉप्टेड एब्रप्टली एंड नेवर टिल ऑल अदर एंड माइल्डर मेथड हैव बीन ट्राइड। पहली चीज, सत्याग्रह सबसे आखिर में करना है, सबसे पहले नहीं करना है। दूसरी बात, ये मेरी इंटरप्रिटेशन है सत्याग्रह की, आप इससे कोई थ्योरी मत निकालिए कि गांधी एक्चुअली कोई थ्योरी ऑफ सत्याग्रह दे रहे थे। दिस इज माय वे ऑफ एंगेजिंग विद हिम एंड ट्राई टू एक्सट्रैक्ट समथिंग आउट ऑफ इट। सत्याग्रह एज ए सेल्फ रियलाइजेशन, मिथिलेश ने जो अंतिम कोट किया, जो अंतिम कोट पढ़ा, वो एक्चुअली इसी से निकलता है। गांधी की नजर में सत्याग्रह मैं अपने लिए कर रहा हूं, तो इतना बर्डन लेकर, इतना बोझ लेकर मैं समाज कल्याण की बात करने से पहले अपने आप को सुधारने की कोशिश करूं। और गांधी ये कहते हैं, कोट कर रहा हूं मैं, अ पर्सन हु क्लेम्स टू बी ए सत्याग्रही ऑलवेज ट्राइज बाय क्लोज एंड prayerful self-introspection and self-analysis to find out whether he is not himself capable of those very evils against which he is out to lead a crusade. उन चीजों को जिनको मैं खुद नहीं करना चाहता, मैं उनका विरोध कैसे करूं। ये दूसरी चीज है सेल्फ रियलाइजेशन। पहली चीज ये है कि सत्याग्रह सबसे अंत में। दूसरी चीज है गांधी के हिसाब से कि सत्याग्रह अपने लिए करना है आपने, समाज के लिए। तो समाज बाद में आएगा, दुनिया बाद में आएगी, पहले आपको अपने को बदलना है। अंतिम बात, जो कि आज के संदर्भ में शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, गांधी की आंखें कभी बंद नहीं हुई। गांधी को बहुत कुछ नजर आता था। तो वो कहते हैं सत्याग्रह एंड पब्लिक ओपिनियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडल लाइट लेकर जो हम सब चले जाते हैं और बाद में सामने जो पानी वाला होता है वो हंस रहा होता है, क्योंकि कैंडल लाइट और पानी वाले का कोई रिश्ता नहीं है। इंडिया गेट पे कैंडल लाइट लेकर हम चले गए, वहां खड़े हो गए 10 लोग, फोटो खिंचवा लिया, और पानी वाला जो वहां पर पानी बेच रहा है वो उसके साथ जुड़ा नहीं, तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा फेलियर है। गांधी इस बात को 1935 में पहचान रहे हैं और वो लिखते हैं, सत्याग्रह के लिए जनमत होना, जन सहमति बनाना बड़ा जरूरी है। फॉर हिम, एंड आई कोट, अ सत्याग्रही मस्ट फर्स्ट मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द इविल विच ही इज आउट टू इरेडिकेट। पहले आपको पब्लिक ओपिनियन बनानी पड़ेगी। When public opinion is sufficiently roused against a social abuse, even the tallest will not dare to practice or openly to lend support to it. An awkward, an unawakened and intelligent public opinion is the most potent weapon of a satyagrahi. पब्लिक ओपिनियन बनाना जरूरी है। तो पॉलिटिकल एजुकेशन जो गांधी कह रहे हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप मान लीजिए पब्लिक ओपिनियन नहीं तो उससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पब्लिक ओपिनियन बनाना भी सत्याग्रह का एक सूत्र है। अब मैं इसको बात को रखकर जो 4 सूत्र मुझे लगता है हमें समझने चाहिए, वो ये है, ये मेरी अपनी समझ है। स्वराज के लिए किए जाने वाले संघर्ष का मकसद लोकतंत्र की सच्ची भावना का निर्माण है, ताकि एक जिम्मेदार राजनीतिक संस्कृति पैदा हो सके, पहली बात। दूसरी बात, संविधान जैसे कानूनी दस्तावेज तभी जिंदा होते हैं जब उनमें निहित मूल्यों के आधार पर अमल और व्यवहार हो। ऐसा ना होने की स्थिति में संविधान के मूल निरर्थक हो जाते हैं। जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको समझना जरूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर वो एक रूल बुक बनकर रह जाएगी। तीसरी चीज,
विधायक का दायित्व तो सिर्फ कानून बनाना नहीं है। यदि सरकार जन विरोध का कोई काम करती है तो विधायक का फर्ज है कि वे जनता को सरकार का विरोध करने के लिए प्रेरित करे। तो गांधी के इस इंटरप्रिटेशन में एक संभावना है क्रांति की भी। अंतिम बात, लोकतांत्रिक संस्थाओं में भागीदारी जरूरी है, लेकिन सिर्फ इस भागीदारी के जरिए लोकतंत्र को परिभाषित करना गलत है। वोटर का धर्म सत्याग्रही का धर्म है। उसे समझना होगा अपने चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखना भी सत्याग्रह है। तो मैं इसी बात से अपनी बात को यहाँ खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Okay, so we have had three very thick and very rich presentations. So I wouldn't want to sum up, but would want to raise, using the discretion of chair, few questions in terms of framing questions that the kind of complex issues three of the presentations flagged off. To Professor Anand Kumar, is Professor Anand Kumar around? Yeah. So you can hear us, right? Yes, of course. Yes, okay. So you raised a very, very pertinent question in terms of why are peaceful protests not working in contemporary times. I think this is a very pertinent question. It's a different matter that even violent protests are not working. None of the protests themselves are not working. So part of the reason, I'm fathoming a guess, as an answer to your question is that much of the the normative principles that were driving the idea of non-violent protest have already been appropriated for something else. For instance, Gandhian idea of endurance, idea of suffering, idea of seva, or the idea of tapas. We know whose lexicon it is today. So that I think that image of what is non-violent has already been hegemonized into the dominant narrative. And part of the problem of the Gandhian imagination seems to be that it is very weak in its resistance against appropriation. It becomes very malleable. This is one question we have to continuously raise, that why Gandhi is so malleable that across board Gandhi so easily becomes a symbol of the state. State never had a problem with Gandhi. And this is my enduring doubt, that why Gandhi never creates Gandhian memory does not create this discomfort for the ruling elite. You go to airports, you will find a big statue of Gandhi. You go abroad, Gandhi is there. Gandhi is everywhere, but Gandhi is nowhere. So this malleability and appropriability of Gandhi, I think, is something that partly would address the question you raised as to why peaceful protests have become are not working, why non-violence as a philosophy. It's something like what Wendy Brown says about democracy. The democracy is everywhere, and that democracy has lost its meaning because it's everywhere and means everything. So my question to you would be, sir, that this malleability of Gandhian is something that we need to think in terms of reframing your question. Perhaps it's also an answer to why peaceful protests no longer work, because that philosophy of behind what is non-violence and peaceful seems to be so malleable into dominant narratives. Second, to Mithilesh, again, you brought in that rich texture of Swaraj. And I think for me, the key question was this, that continuity of the idea of Swaraj between Madan Mohan Malviya, and it goes back to Savarkar, in fact, all the way, that this whole reinterpretation in terms of the Sanatan. Again, in terms of, as a normative, at a normative level, one can make a distinction between what Gandhi is saying, what others are saying. That's an easy task to do. But politics is never about the normative. Politics is also about the lived way of life. I think, again, coming to the current context, one of the problems seems to be that how do we make a distinction? How do we make a distinction between what Madan Mohan Malviya is saying, what Savarkar is saying? Because all of them are talking about larger, it's only the scale of the Hindu identity differs. So this, once you begin to convert Hinduism into a way of life, you're invoking it more as a culture rather than organized religion.
then I find it that it is extremely difficult for us to kind of distinguish between the Gandhian shades of Hindu way of life from not only Malviya, but at times even with Savarkar. I think that's why the current regime, when it invokes a Hindu way of life, we only have recourse to normative critique. That, this is not being done, that is not being done. That's okay. But as a way of life, I think the Hindu right looks close to people's way of life. The idea that some of you brought, that it has to be close to the way of life. I mean, it comes from your own. If Prashant Kishore can be Gandhian, why not anybody else? No, it makes no sense to me, absolutely. And so that's, and to Hilal, again, a very rich question you have made, multiple layers of distinction in terms of the present, the translatability of Gandhi into the present, and you have given those ideas of self-realization, all of those. But again, I think the question is this, that this Gandhian idea of the good life or the ethical life assumed a certain social conceptual space in the early 20th century, right? That we took certain binary dichotomies as given. For instance, Gandhi's continuous invocation of spirituality against materiality. Personal ethics versus public. What I find today, Hilal, is that what we thought were constitutive contradictions, and what perhaps we need to learn from the right is that they have demonstrated that there can be a simple continuum between them. That inherent constitutive tension that we thought, on which perhaps much of Gandhian praxis and Gandhian philosophy is based on, that Gandhi thought that he would puncture materiality and this whole Western critique of modernity, what he calls greed, accumulation, through a spiritual practice as a Satyagraha or in terms of ethical religious practice. Today you have a regime which is unapologetic in terms of materializing spirituality itself. And in fact, today spirituality makes sense only in its material accumulation. So if I were to turn, Nehru said that, dams are the temples of modern India. And today is a regime which is telling you the temples are the dams of modern India. We thought there's a huge, humongous gap between these two, and the whole Nehruvian idea of modernity, is pulling in a different direction. Here is a regime which has really thrown a grave epistemic challenge right in our face, saying that, all this that we thought were pulling in different direction, tensions, incompatible, simply there's no adjustment possible. Somebody comes along and says, build a temple, अच्छा business होगा. और गरीब का कल्याण होगा, रोड बनेंगे. लास्ट में भगवान है, रोड खरीदार सब जाने के बाद मंदिर मिलेगा. मंदिर और मंडी में ज्यादा फर्क नहीं है. हम सोचे बहुत इसमें लड़ाई है, गांधी विल हेल्प अस रिकवर स्पिरिचुअल सेल्फ, बट टुडे वी आर टोल्ड मंडी विल हेल्प यू टू रिकवर मंदिर. दान में डालो, मंडी के बिना मंदिर नहीं है. And people are finding it extremely attractive. It's also because there is a certain kind of a subaltern counterculture that marketization involves, which is what perhaps was a limitation of the Gandhian philosophy. That notion of self-realization, that notion of spirituality as a critique of materialism already had that social class, caste locationality to it. Aloysius and others work bring together. So I think these are very grave challenges that contemporary times has thrown at us, and we need to invoke Gandhi to really ask us, does Gandhian philosophy really help us? Bring back, retrieve. So it's, as you rightly say, it's not about just retrieving some quintessential Gandhi. It's a Gandhi of our times. They address Nehru and Gandhi universal questions of their times, but I don't think anyone would have ready-made answers to the kinds of crisis we are facing, including Ambedkar. So what is that we need to really retrieve? Whether it is Swaraj, whether it is self-realization, whether it's non-violence, has to be read in a current context, because all the assumptions behind Gandhian philosophy are today bust. That I don't think they are simply relevant in our conceptual space, and we have to
concede and grant it to the right wing that they have simply allowed us to collapse. That it can be simply done in very different way. In a non-disruptive change, there is a question of continuum, those binary oppositions, mutually exclusive assumptions between ethics and method, all that has simply changed, which is itself, I would argue, becoming such transformative discourse for the subaltern castes and classes to identify with this regime. Unless we don't find a way of upturning that signification, in that, my question would be, would Gandhi contribute something to us? That is our new Gandhigiri we need. Okay. With those questions, I now will take some questions and then we can respond everything together. Yes, it's the house is panel is open for questions. Yes, Ravi. Okay, thanks. Thanks, Ajay. I'm not going to focus on what Ajay has said because that's another agenda of what we should do. Presentations. And to say some and Raju Hirani. Okay. Uh, because, yeah, exactly. Because, Raju Hirani is presenting his own, and there is a historical defense of that, right? The peasants of Chauri Chaura are like Sanjay Dutt, right? Shahid Amin has told us, okay? Gandhi as Mahatma, those peasants, once again, of Gorakhpur, are imagining Gandhi in their own image. That Gandhi is divine. That Gandhi comes out of a pond and tells them, participate in Satyagraha, you will be richly rewarded. If you don't, your son will die, So it's not as if, there's no historical evidence for Raju Hirani. There's any lack of historical evidence for Raju Hirani. So it's इतिहास सम्मत है वो फिल्म. लेकिन बहुत बड़ी मजा आया और जाहिर no, I mean, as a general, I still feel the question of appropriability, Ajay, would be applicable to Bhagat Singh also, right? Bhagat Singh also gets used left, right, center. That does not mean that the regime has really, exhausted Bhagat Singh or Bhagat Singh becomes unusable for others, So there's that possibility still alive also around Gandhi, as Hilal showed. How you can even, as simple a question of keeping accounts, right? And keeping it public, that you don't indulge in any kind of corruption, right? It's as simple as that. Even those practices, Gandhian practices, are so relevant. Even if you don't take Gandhi as a great revolutionary of all times to come, obviously one has to keep renewing Gandhi as well all the time. I enjoyed it. Yeah. Mike. Yeah, I think the malleability or the question that you have raised, and I mean, it's in a sense, it is in the face to know what we need to do. I mean, the confrontation with modernity, I think where the intelligentsia had to grapple with that. That has not happened. I mean, it has not happened seriously in a sense. And with that, there is a particular, with modernity, there is a particular understanding of the relationship between the state and the reinforcement of identities, separate identities, which again, the intelligentsia has never grappled with. They are scared to speak their mind. And that is why what you are talking about, that the appropriation that you can do of Gandhi, the right wing can take it, and now
when the left wants to have, to understand how you get public support, then the left wants to somehow appropriate Gandhi. So I would like to know what is it that Gandhi has not discussed and what we cannot understand. In a sense, it is for me 100 volumes, and each one has, despite his disclaimer that there is no consistency to his thought, there is an overall and overarching thrust of his thought that should not fail to miss us if we want to take him seriously. So, this. This is addressed to the three and also to you, to the chair. And I think, let me begin with a conversation I had with my student regarding the present conundrum in which we are. तो डेमोक्रेसी की हालत ठीक नहीं है, तो स्टूडेंट से इसके अच्छा कहाँ से शुरू करें, तो student's definition is Abraham Lincoln's definition. Democracy is blah, 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 of the people, by the people. But our problem is that the people are depraved. Okay, people are depraved. And this takes me to the issue of the quality of citizenship, the quality of citizens. And from there, I will go to what Dr. Mithilesh, where he was talking about. And that connects with Gandhi's views on Swaraj. And when we talk about Swaraj, let us recall the four components in which he breaks Swaraj. So you have national independence, you have individual freedom, political freedom, economic freedom. And the fourth one is spiritual freedom, self-rule. The interiority of that concept of Swaraj, which is so fundamental. And let us also recall what Gandhi had to say, कि अगर ये स्वराज, रेफरिंग टू दी फोर्थ वन, नहीं है, तो ब्रिटिशर्स जाएंगे, उनकी जगह पे फिर कोई वैसा ही आएगा. तो वैसा ही हुआ है. ब्रिटिशर्स गए तो फिर कांग्रेसी आए, फिर अभी हिंदुत्ववादी आए हुए. ठीक है. दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और फिर सवाल ये भी उठता है कि अगर हम स्वराज के कॉन्सेप्ट पे जाएं जिस तरीके से हो, तो गांधी के ऑन्टोलॉजी पे गए हुए में हम लोग उनके साथ जस्टिस नहीं कर सकते, ना उनके मेथड्स हम आगे ला सकते हैं. ये लड़ाई है तो वो ऑन्टोलॉजी की लड़ाई है, उसकी प्राथमिकता और किसकी होनी चाहिए. और उसकी ऑन्टोलॉजी में, गांधी की ऑन्टोलॉजी में जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग है, वो ह्यूमन बॉडी सोल कॉम्पोजिशन का है, कॉम्पोजिटनेस का है. ठीक है. और वो जब तक वो स्पिरिचुअल फ्रीडम के प्रोसेस से कोई नहीं गुजरता है, 15 मिनट, अगर वो उस प्रोसेस से अगर वो कोई नहीं गुजरता है, तो वी डोंट हैव द काइंड ऑफ सिटीजनशिप जो हम डेमोक्रेसी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं. नतीजा ये है कि ऐसे ही लोग सिटीजन भी और ऐसे लोग वोट लेते भी हैं और वही गवर्न भी करते हैं. तो इस सेम तरह की ये चीजें आ रही, इससे वो कुछ आगे निकलने को नहीं है. और इफ यू अगेन रिकॉल गांधी एंड हिज इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल मूवमेंट, वो था कि इंस्टिलिंग दैट सेंस ऑफ करेज. ठीक है. आज हम डेमोक्रेसी और लिबर्टी हमारा महफूज रहे, उसके लिए हम इंस्टीट्यूशंस पे देखते हैं, इंस्टीट्यूशनल बैलेंस पे. इंस्टीट्यूशन में बैठे कौन लोग हैं? वो करेज का अभाव है. उस करेज के अभाव के वजह से ये इस कॉन्डनड्रम में हम फंसे हुए हैं. परहैप्स मैं चाहूंगा प्रोफेसर आनंद कुमार जी से भी इन इश्यूज पे प्रकाश डालें. थैंक यू. Yes. थैंक यू सर. मेरे दो सवाल हैं. पहला सवाल है प्रोफेसर आनंद कुमार सर से.
जिसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब हम राजनीतिक विज्ञान में गांधी को पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले जब संविधान में गांधी की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि गांधी के पूरे आइडियाज़ को संविधान में अप्रोप्रिएट नहीं किया गया है। हम जनरली मानते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में उनको कहीं जगह दी गई है। और हम जब गांधी को पढ़ते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि जहाँ हम सत्य अहिंसा उनके मूवमेंट्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम गांधी के मशीनीकरण का विरोध, औद्योगिकरण के विरोध को भी पढ़ते हैं, लेकिन उसको हम उतना फिलोसफाइज नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि उसकी कई वजह हो सकती हैं, लेकिन मैं ये सर से जानना चाहूँगा, प्रोफेसर अनंत कुमार सर से, कि गांधी के उन आइडियाज़ को जो कि उस समय भी चैलेंज थे और अभी भी चैलेंज है, अभी भी एमएनसीज का दौर है, कैपिटलिज्म का दौर है, तो अभी भी हम उनके आइडियाज़ के हिसाब से गांधी को कितना रेलेवेंट मान सकते हैं, एक ये सवाल है। और दूसरा सवाल मेरा हिलाल सर से है, जिसमें हम देखते हैं कि हिलाल सर ने बात की कि 1920s में भी एक गांधी का दौर था जिसमें हम एक मेजर यूरोपियन डोमिनेंस से ग्रसित थे कि हाँ भाई हमें उनसे आज़ादी होनी है। मुझे लगता है कि आज के दौर में भी हम एक तरह के डोमिनेंस से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं, जिसमें हम देखते हैं कि विशेषकर अकेडमिया हम अधिकतर ये फेस भी कर रहे हैं। मुझे लगता है सभी लोग आप जानते भी होंगे कि हम एक वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें हम देख, जैसे सर ने बताया कि उस समय के हमारे सत्याग्रह के एक फेज था जिसमें सेल्फ रियलाइजेशन और दूसरा पब्लिक ओपिनियन की बात हो रही है। लेकिन जो हमारा नॉलेज सिस्टम जिसको हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हम बहुत सारे पब्लिक ओपिनियन बना चुके हैं कि क्या वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम जो है वो हमारे लिए अप्रोप्रिएट है, लेकिन जो हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम है वो कितना अप्रोप्रिएट है उसको भी खोजने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सर से जानना चाहूँगा कि गांधीयन वे में क्या इस तरह के जो डिलेमा है आज के इस एजुकेशन सिस्टम में, कि क्या वो हो सकता है सेल्फ रियलाइजेशन में कमी है या फिर पब्लिक ओपिनियन से उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? ये दो सवाल है। थैंक यू सर। आपके पीछे Good afternoon, sir. Myself, Selim Kushal, Political Science first year. Sir, my question is that in this modern scenario of warfare, privacy breach, and artificial intelligence and artificial consciousness, how we can tackle these issues of privacy breach and technological freedom through Gandhian's lens? you have, yes, sir. Good. Yeah. So this is the last question, unless some of you have a pressing question. There's bombardment, my entire concept note has caved in. Right? So the thing is that what Hilal was referring to in the morning, yeah, that modern, form of protest and satyagraha, that associating with that paniwala, what he referred to, that you do protest, but you don't associate yourself with the object of your protest. And I remember particularly when this anti-corruption movement was happening in Delhi, Anna Hazare, and even before that, a lot of candlelight protests used to take place on India Gate. And I remember one of my friend told me that every day he was going to Lodi Garden with his pet, but for a few days he, instead of going to Lodi Garden, he started going to India Gate. So I said, why you did this? So he said that I optimally utilized my time. जो कुत्ता को तो टाला नहीं था, तो टाला भी रहे थे और कैंडल लाइट भी वहां पे दिखला रहे थे. I mean, this type of protest in the imagination of the people is not going to work in today's context. Of course, yesterday we were discussing here that the entire idea behind this seminar is to reimagine this concept of satyagraha. For example, you can't afford to be the purist in the Gandhian mode, जो पहले व्रत कर लो और फिर फास्टिंग रखो और तब सत्याग्रह में जाओ, और तरह तरह के जो व्रत गांधी बताए थे, आज यदि कहेंगे तो कोई एक भी सत्याग्रह नहीं होगा. लोग कहेंगे हम डायबिटीज हम व्रत कैसे रखें? A lot of problems will happen. I mean, you can't. I mean, the thing you can't be purist. लेकिन इतना भी purist मत. राजनीतिक डायबिटीज भी बढ़ रहा है. लेकिन इतना भी modification नहीं हो. इतना भी मॉडिफिकेशन नहीं हो जो लोधी गार्डन के बदले हम इधर चला जाए, आई मीन पेट भी टल जाएगा और मेरा प्रोटेस्ट भी हो जाएगा. दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क. दैट इज वन थिंग. द सेकंड थिंग, in fact, what Ajay was saying, this Swadesh, this Savarkar, and in fact the distinctive aspect of Gandhian Swaraj
is the relationship between Swaraj and Swadeshi. And it is here his idea trumps over all of this. For Gandhi, it is not a Swadeshi which is the governing principle, it is the Swaraj. Anything which leads to Swaraj is good, even if it is at the cost of Swadeshi. For example, he always argued that untouchability is the most Swadeshi thing, but it does not lead to Swaraj. Therefore, we have to condemn it, we have to fight it. But many of his contemporaries tied Swadeshi with the Swaraj and privileged Swadeshi over the Swaraj, unlike Gandhi. And in Gandhi, it was just the reverse relation. So thereby, I think that we can see that, the difference between, if I don't know how Savarkar was talking about Swaraj, because one of the most glaring difference between Savarkar and Gandhi was in terms of their prioritization of civil society over the state. Gandhi prioritized civil society over the state, but for Savarkar, it was the state which was basically the central loci of power. So, I mean, that is another. And the third, Professor Anand Kumar and Hilal also, this new social movements, I am finding one commonality between the Gandhian discourse and the new social movement is this concept of people, people-centric. And they say that whatever people do, the new social movements normally, starting with Chipko to, all modern avatars, they say whatever people do is great. People is infallible. It is sacrosanct. Either the people is above criticism or below criticism. You can't criticize them. But that was not the case with Gandhi. Gandhi always subjected people to rigorous criticism. Right? That you are doing this thing which is not good. You should take corrective measures. But the new social movement, the protagonists, the advocates of new social movement hesitate to critique. So I think they swear by the Gandhi's name. They say that they are inspired by the Gandhian Satyagraha. But here I think they need a course correction. And you must be knowing that the people is basically out for different usages. People are doing man ki baat with the people, right? Directly communicating with the people over the head of the institutions and the processes. So people, of course, is the foundation of our entire democratic thinking and idea. But that people can also become a menace. I think that the French Revolution demonstrated it much more than perhaps any other event in the history. I will stop. Okay. So we have a. Well, yes, please. Okay. Hilal mentioned about, this is a very innocent question, okay. Mentioned about bhakti. I wonder at times where it leads to. Bhakti in our tradition had always incorporated questioning. Now it seems that questioning is not needed. Bhakti is enough. And that's why the community can also be controlled. There's a big problem now. It had always been there, but now it has taken a political turn. How do you face that? You want? Okay. It's the idea that when we talk about Gandhi and the three principles I was talking about, like fact, non-violence, satyagraha, it's like modern day protesters or social movement. One thing is there that you can't pick and choose. It's you have to be true to all principles of Gandhi. सच के लिए लड़ना और सच के साथ लड़ना, they are two different things. So I think why we are seeing not social movements coming up, because they always say that हम सच के लिए लड़ रहे हैं, but the way they fight, that is not the right way they fight for. So Gandhi is not telling you कि आपको किस चीज के लिए लड़ना है. गांधी के पास, I don't think he has answers to everything. There are incidences where he has gone on and people were asking him that Gandhi ji kuch boliye, and Gandhi ji is silent. So it's not that Gandhi has answer to everything. It is like
maybe the social movement in today's time are trying to use Gandhi and imagining a lot basing on Gandhi. Maybe Gandhi has never said those things. So we have to think about it. Like sir said that Gandhiwadi kya kar rahe hain? My question is, who is a Gandhiwadi in today's time? Because now everybody seems to be a Gandhian. So you can just have to put a photograph of Gandhi somewhere and you become a Gandhiwadi. So usage of Gandhi and the way we have imagined about Gandhi has also led us he never believed in it. So preparation is one thing Gandhi has talked a lot about. So before everything, every moment, you have to prepare for it. So when he's preparing for it, when he first thing he came to India and he's gone for a tour to India. So he's preparing himself, he's preparing masses for it. Only then anything can be successful. So I think the preparation is also missing in us, and very instantly we just respond to something and we are not preparing our responses. So these are first, I really want to know who is a Gandhian in today's time. So that's my question. So any more questions? I think more important to listen to questions. We can then ask the respondents to follow Gandhi and Mohan as a response. Because you may not have answers to everything. Yes. धन्यवाद सर। सर मेरा एक प्रश्न है कि सत्याग्रह और प्रोटेस्ट के बीच का जो अंतर क्या है, और विगत 20 सालों में क्या कोई ऐसा मूवमेंट हुआ है जिसको हम सत्याग्रह कह सकते हैं? You want? Take the mic. जितने भी स्पीकर्स ने बात रखी है, प्रोफेसर आनंद कुमार से लेके यहाँ बैठे हुए जो है, मैं सोच रहा था उन्हीं लाइंस पे कि आखिर आज के दिन हम सभी लोग गांधी में ही इतना भरोसा क्यों जता रहे हैं कि गांधी ही आज की स्थिति से हमको उबारेंगे। ये सिर्फ सतीश का प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। और मेरा ये भी मानना है कि जैसा एप्रोप्रिएशन की बात हुई, राइट विंग में पहली बार नहीं है दुनिया के इतिहास में कि एप्रोप्रिएशन हो रहा है। उनका तो आदत ही एप्रोप्रिएट करने का, हर चीज को एप्रोप्रिएट करते हैं। वो राइट आइकॉन को तो करते ही हैं, लेफ्ट को भी करते हैं, लिबरल को भी करते हैं, सबको उन्होंने एप्रोप्रिएट किया हुआ है। भगत सिंह को भी एप्रोप्रिएट किया हुआ है और बाकी जितने भी आइकॉन है सबको सेलिब्रेट करते हैं। मेरा सीरियस सवाल ये है कि आज जिस स्थिति में देश खड़ा है उसमें सबसे मुख्य समस्या क्या है? जैसे हिलाल भाई बोल रहे थे कि आज को जानने की जरूरत है। हम अपने आज को नहीं जान रहे हैं। कुछ लोग हैं जो जान रहे हैं और कुछ लोग हैं जो नहीं जान रहे हैं। जो नहीं जान रहे हैं उनको कैसे बताएं कि आज का आज क्या है, और फिर उसके बाद हम कहीं ना कहीं हमारी समझदारी है कि हमारा समाज, हमारा देश जो है गलत दिशा में जा रहा है। और अगर गलत क्वेश्चन मेरा सवाल ये है, गलत दिशा में जो जा रहा है उस गलत दिशा में से जाने से हम कैसे बचा सकते हैं? आज के इंटेलेक्चुअल्स की क्या जिम्मेदारी है और क्या वो इंटेलेक्चुअल्स मास के साथ कनेक्ट करता है? थैंक यू। Good. So we have had a full session of, I think we could have taken more questions, but we are absolutely out of time. So with a heavy heart, I would say 2 minutes each. Sir, Professor Anand Kumar, it's over to you to answer. You can kind of selectively answer the thrust of all the questions. Now, I'm very happy that your session has been very successful in cultivating so many questions, because the purpose of a seminar is not to create clarity, absolutely, but to promote confusion. And you had good response from all the three panelists, as well as the eminent chair. उससे पहली बात तो ये है कि गांधीयंस के बारे में हम आपको उनको खाली हम देखना चाहते हैं जो फॉर्मली अपने को गांधीयन कहते हैं। सर्व सेवा संघ, गांधी पीस फाउंडेशन, साबरमती आश्रम, सेवाग्राम, इससे कनेक्टेड कुछ हजार लोग अभी भी हैं और उनको ही हम लोकेट कर सकते हैं प्रैक्टिसिंग गांधीयंस के तौर पर।
क्योंकि वो 4:30 बजे अभी भी सवेरे उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, सर्वधर्म प्रार्थना करते हैं, थोड़ी देर चरखा चलाते हैं, फिर शाकाहार करते हैं, जाने क्या क्या करते हैं। तो उनकी बात है। दूसरे, गांधी की प्रासंगिकता के बारे में, ये जो रचनात्मक कार्यक्रम उन्होंने 1946 में दिया था, उसमें से 18 में से 18 मुद्दे बढ़ के 28 हो गए, घटा एक भी नहीं। जो हिंदू मुसलमान संबंध जो पहला मुद्दा उन्होंने बताया था, तो अभी बनारस में, अब आपको अयोध्या से फुर्सत मिली है, बनारस चलते हैं, फिर वहां से मथुरा चलेंगे, फिर वहां से गली गली घूमेंगे। उसी तरह से छुआछूत का सवाल किसी भी दलित एक्टिविस्ट से पूछ लीजिए, विल्सन बेजवाड़ा से लेकर के, और वो जो मंत्री हैं इस समय केंद्रीय सरकार में, उनमें से कोई नहीं इसके बारे में आपको गारंटी देगा कि वो सवाल सुलझ गया है। ऐसे ही स्त्री प्रश्न, तो जो रचनात्मक कार्यक्रम की बात थी वो अभी खड़ी है। और अब आइए संविधान के बारे में। ये सही है कि गांधी जी ने संविधान सभा में अपने को बटा हुआ पाया। उनके जो दाहिने बाएं हाथ थे, जवाहरलाल, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, कोई मामूली लोग नहीं थे। 1917 से या 1927 से उनके साथ थे। ये दिन दो दिन का रिश्ता नहीं था। और वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे, कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बाहर थे। तो गांधी को आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी देखेंगे और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बाहर भी देखेंगे। तीसरी बात है आज की, कि आज की दुनिया के लिए गांधी को हम क्यों झंझट में डालें। उनको मार दिया, खत्म किया, जला दिया, खत्म किया, छुट्टी करो उसकी और आप अपना जिम्मा संभालो। तो अभी 2015-16 में यूनाइटेड नेशंस के सभी देशों ने मिलकर के एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया है और कहा है कि 2016 से 2030 के बीच में अगर दुनिया नहीं संभलेगी तो हम लोग जहन्नुम की तरफ जाने को तैयार हो जाए। और अगर आप उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की एजेंडा को देखिए और गांधीयन एजेंडा को देखिए, तो कम से कम 50% तो वही है जो गांधी ने 1946-47 में बताया था। तो कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, जैसे कुछ पुरानी बीमारी होती है, हम डॉक्टर बदल सकते हैं। मुझे डायबिटीज है, मैं डॉक्टर के पास गया, उसने दवा दी, मुझे अच्छा नहीं लगा, उसने रसगुल्ला भी खाने को मना किया, शराब भी पीने को मना किया, तो फिर जिंदगी में बचा क्या? तो किसी और डॉक्टर के यहाँ गए, उसने कहा कि सब खाइए पीजिए और हम आपको बचा भी लेंगे। तो ऐसे ही हम लोगों ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, मिक्स इकोनॉमी से लेकर के ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, कई डॉक्टरों के कई इलाज किए हैं और सब इलाज रोग को बढ़ाते जा रहे हैं। तो फिर वापस उस पुराने डॉक्टर को खोज रहे हैं जो थोड़ा और बूढ़ा हो गया, थोड़ा कम सुनता है, थोड़ा और जिद्दी हो गया है। अभी इतना ही कहना, धन्यवाद। थैंक यू सर। आज का प्रॉब्लम यही है, अब खाओगे तो बीमार पड़ोगे, नहीं खाओगे तो कोई गारंटी नहीं बीमार नहीं पड़ेंगे, इसलिए लोग खा रहे तो मिथिलेश, ओवर टू यू। थैंक यू। मेरे ख्याल से सभी सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था, पर दो तीन बात पे जरूर मैं बोलना चाहूँगा। एक क्वेश्चन था एप्रोप्रिएशन का और मेलिएबिलिटी का। तो ये मुझे लगता है कि ये हमारा अपना एक नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क है जिसमें हम वी एंड दे का लैंग्वेज बोलते हैं। मेरे ख्याल से गांधीयन जो सिंक्रेटिक अप्रोच है वो उसमें पूरी तरह से शायद फिट नहीं बैठता है जैसा मैं देखता हूँ। तो क्यों नहीं अप्रोप्रिएशन हो या मिस अप्रोप्रिएशन हो, उसका फिर काउंटर हो और इसके थ्रू ही सोशल पॉलिटिकल डायनामिक्स अनफोल्ड होता है। उसको हम माने अपने नॉर्मेटिव पोजीशनिंग के वजह से डिसरिगार्ड या सेल्फ क्रिटिक करके नहीं रख सकते हैं। वो ये हमारा एक सीमित ये होगा। एक वो बात मैं बोलना चाहता था। दूसरा सर, गौतम सर आपका जो सवाल था और सतीश सर या दूसरे लोगों ने भी जो उठाया है कि गांधीयन कौन हो सकते हैं, कितने रिलेवेंस हैं, जो रिप्रेजेंटेशन का सवाल था, और उस सभी के मूल में एक मुझे लगता है कि जो गांधीयन जो क्यों हमारे लिए गांधी ही एक सोर्स बचते हैं, नॉट जस्ट हमारे लिए, सभी के लिए ग्लोबली नाउ। एसडीजी के साथ सर ने कनेक्ट करके दिखाया है। वो एक बात है कि जो हम ह्यूमन हैं या इंडिविजुअल हैं वो हमारे सरकमस्टांसेस से काफ़ी हद तक सीप हुए होते हैं। और जो हमारा अभी सरकमस्टांसेस है तो उसमें मेरे ख्याल से क्रिटिकल इंटेलेक्चुअल से ज़्यादा जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जो हमारे पॉलिटिक्स जब गांधी कर रहे थे उसका एक क्रिएटिव
एजेंडा था, जिसमें नए समाज, नई राज्य की विचारधारा थी, या उसको अचीव करने का एटलीस्ट करेज था बहुत सारे लोगों में, वो कहीं ना कहीं हद तक अभी हमारा पॉलिटिकल इकोनॉमिक अलाइनमेंट की वजह से हो गया कि कुछ लोगों को सर्व कर रहा है, और मेजोरिटी ऑफ अस आर लेफ्ट आउट. Maybe our voice are there, but it is not strong enough, not plausible enough, and also our expectation to have something grand at the grand spectacular level only we recognize or acknowledge the changes. वो गांधीयन जो आइडिया था, मैं दोबारा से कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति का अपना जो सरकमस्टांसिस है उससे कनेक्ट हो, और सरकमस्टांसिस व्यक्ति के डिसीजंस को डिफाइन नहीं करें. मच ऑफ इन आवर सोसाइटी, इन आवर पर्सनल लाइफ, इन आवर कम्युनिटी, द थिंग्स आर इंडिविजुअल इज हाउ मच फ्री टू थिंक फॉर हिमसेल्फ or decide for himself. I'll just leave it there. Thank you. Okay, thank you, Mithilesh. So over to you, Hilal. सभी सवालों को अगर मैं इकट्ठा करूं तो मुझसे मूल तौर पे 3 सवाल पूछे गए हैं. पहला सवाल जो है वो प्रासंगिकता का है कि गांधी की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है. मैं बिल्कुल, मेरी कोई दिलचस्पी इसमें नहीं है कि मैं सच्चा गांधी ढूंढूं. गांधी के सवाल और हमारे सवाल या मेरे अपने सवाल काफी मिलते जुलते हैं, तो मुझे इसलिए एक शब्द बड़ा अच्छा लगता है, गांधी जन. तो गांधीवादी कोई होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन गांधी जन एक अच्छा शब्द है, और गांधी जन मुझे लगता है कि ज्यादा स्वीकार्य भी है. तो पहली बात तो ये है. जो 3 सवाल पूछे गए हैं उसका पहला सवाल तो यही है कि जिस धर्म को हम धर्म कहते हैं वो आज का धर्म क्या है. और सर ये आपके सवाल से भी जुड़ता है कि भक्ति जिसको हम कहते हैं उसमें स्पिरिचुअलिटी नहीं है. इसके बहुत सारे मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ, और वर्तमान में हमने तकरीबन 2 बहुत बड़े सर्वे भी किए हैं जिसमें हमने ये पूछा कि आप जिस धर्म को मानते हैं वो धर्म क्या है. तो और आप अपने आप को हिंदू, अगर मैं 2 ही उदाहरण लूँ, हिंदू और मुसलमान, तो हिंदुओं के लिए गाय का गोश्त खाना उनको हिंदू नहीं करता. सबसे सेंट्रल पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट जिस पर आता है, सबसे ज्यादा लोग जिस बात को कहते हैं, वह व्यक्ति जो गाय का गोश्त नहीं खाए वो हिंदू है, सच्चा हिंदू है. और जो व्यक्ति, जो मुसलमान सूअर का गोश्त ना खाए वो सच्चा मुसलमान है, भले ही वो मस्जिद ना जाता हो, भले ही वो अच्छे काम ना करता हो. तो ये मंटो की कहानी मुझे याद आ गई जिसमें बालों से सब कुछ हो रहा था. तो मजहब हमारा ये है, और उस मजहब में हम अगर गाय और सूअर इतने इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो किसी धर्म में, तो भक्ति कैसी होगी आप उससे अंदाजा लगा लीजिए. उत्तर औपनिवेशिक काल में आजादी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि गांधी के धर्म पर जो जिसमें बराबर एक चीज आती है वो है रीजन, तार्किकता. गांधी बराबर ये बात कहते हैं कि अगर कोई धर्म, कोई भी जो चीज आप मुझे पेश करेंगे और उसमें तर्क नहीं होगा तो मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा. इसीलिए जो गांधी के राम है या गांधी के कृष्ण, कई सारी जगह वो ये बात कहते हैं, और खासतौर से जो गीता का उनका जो गीता वाला जो अनुवाद है उसके अंदर वो ये बहुत स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि मेरा कोई लेना देना दशरथ के पुत्र राम से नहीं है. मेरे लिए राम एक स्पिरिचुअल एंटिटी है. मेरे लिए कृष्ण वो कृष्ण नहीं होते जो गोपियों के कपड़े लेकर भाग जाते हैं. मेरे लिए तो बहुत आध्याय हैं. ये उदाहरण है, ये मेरे शब्द नहीं है. तो ये बात, पहली बात तो उसे रिकन्फिगर नहीं किया गया जो स्पिरिचुअलिटी की बात थी. दूसरा सवाल जो मुझसे पूछा गया वो था प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स का. गांधी इसमें बहुत, देखिए जो सेल्फ रियलाइजेशन वाली बात है सर, वो और प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स मिली जुली चीजें हैं. प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स मीनिंगफुल तभी होगी जब उसके पीछे का विचार सशक्त होगा. प्रोटेस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोटेस्ट या टूल किट जिसको हम पॉपुलर जबान में कहते हैं, वो मीनिंगफुल हो ही नहीं सकती जब तक कि आपका जिसे कमिटमेंट बिल्डिंग कहा जाता है वो नहीं होगा. इसीलिए गांधीयन फ्रेमवर्क में पॉलिटिकल पार्टी और सोशल चेंज 2 अलग अलग बातें हैं. वेनगार्ड पार्टी का आइडिया गांधी में नहीं है. कारण उसका बहुत जो स्पष्ट है वो ये है कि जब पूरा समाज ही, यदि हम उसको सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में लाएं, तो जो प्रोटेस्ट होगा वो अंतिम स्तर पर होगा. तो प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स की अपनी लिमिट है. बाय द वे, जो प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स है वो अपने सैचुरेशन पॉइंट पर तो बहुत पहले पहुंच चुकी थी. प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स का अपना सैचुरेशन पॉइंट बहुत पहले पहुंच चुका था. उसका रियलाइजेशन हमको अब हो रहा है. अंतिम सवाल जो मुझसे पूछा गया वो है मेथड का सवाल, जिसे पॉलिटिकल एजुकेशन कहा जाता है. पीपल का सवाल जो आप कह रहे थे, जो शब्द है जन, वो हमारे तक आज के संदर्भों में आता है 3 रूपों में.
जन का मतलब हम कहते हैं पीपल का एक मायना है आम आदमी जो बड़ा मजबूर और त्रस्त है। जन का एक मायना है टैक्स पेयर जो अपना पैसा देता है और दूसरों को पालता है। ये नहीं मालूम मुझे कि इस देश में कौन टैक्स पेयर नहीं है। और तीसरा है वोटर। और ये तीनों ही मायने जो है वो मार्केट ड्रिवन है। ये डोमिनेंट मीनिंग ऑफ पीपल है इस समय में। इसमें कलेक्टिविटी की गुंजाइश नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि पॉलिटिकल मोरालिटी जिसको कहा जाता है वो नहीं है, और कोई भी पॉलिटिकल एक्शन जो कि आता है पॉलिटिकल एजुकेशन से उसके लिए स्कोप नहीं है। तो ये तीन चीजें मुझसे पूछी गई थी। बाकी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि मैं अपने 2 मिनट से ज्यादा ले चुका हूँ। थैंक यू। Okay, so I should thank all the three speakers and all of you for these lovely questions. And with that, we should call it a day and invite you all for a good lunch. The announcement from organizers: come back in 45 minutes, have a very frugal Gandhian lunch, and come back. Thank you so much, sir. I would request all the guests and speakers to please proceed for lunch. We will meet exactly after half an hour.